Okay, say, how now tozi? YouTube की links मैं search share करूँगी ये, तो how है? क्या यार how चले जी? ये वो ऐसे कोई तो से gravitation chapter डूगी question analysis तो बा. And let's start. Satra yam bang si no class lai हुजूर class तो बने ये बा फंगम दबे यार. कौन record वने exercise no? Now how is? Session किधंग सांग पे आई मैम देखो gravitation ये अयाम बा question में आमा होत तो निकाल. So अनोबा कनोम थारगे gravitation question session. ओके यार स्क्रीन जी उरम नत्र स्क्रीन जी उरबो मैं याव रिव जंग कोमो साउंड जी तारबा स्क्रीन जी यारबा Sorry, sir. आसे कनो तौजे नो ये बेट्स खरा दने को ये किजी वेट की कांसेप्ट सिमा चिथारमेबा ना किजी वेट की कांसेप्ट तो मा होलगे अदगी नो बेट्स खरा दा को ये स्केल वेलोसिटी की क्वेश्चन नहीं नरम दबा खरा यावरी अदु सिंगो हानम ता तौये को सो दैट नो ये क्वेश्चन एनालिसिस होल सेशन जी येनिंग द्रगा जो नो क्लास ता ताकिबा क्वेश्चन मयाम के नॉर्मल क्लास ता ताकबा क्वेश्चन अमा नि ख वाल होबदु ख गेंगना बा लाकपसिंग की को मोय कारणबा सो अहानबा concept दा किजी वेट concept किजी वेट यमसे सिलेबस ता कइदोंग दसी इरोय इद्रगसु ना खंगदबसी किजी वेट हाबजे फिजिक्स की ओबा बेसिक concept मचाम खने फंडामेंटल concept नि वाटर इक्विवेलेंट हाबजे नगी एनर्जी concept ता कोन हिट नाइनरी बकान दसी नरी बने अन किजी वेट हाबजे कोन ने वेट हाबजे कइनो तसेंना वेट ऑन गे हारडी actual weight हारगदी weight the force ने and the weight city it should be in a newton we don't know weight are measured in newton अदुबो अखोना normal दी weight हाइबा कांदा से मीना अखोइदा weight नंगे weight कयानो हाइ कांदा कइदोंगैदा अखोय नंगे 500 न्यूटन 700 न्यूटन दी हाइना देदना करी ओइना हाइ 500 न्यूटन हाइबे मोता 50 केजी अमसिना 70 केजी हाइना येबजे अदु नंगे ngसागी हंगकपना weight हंगेबा आइना खुमिसना mass ने 50 केजी 70 केजी हाइजे अदु सिगी मास से बखोइना मास ओइना उबा याद्रे मैम द मीना वेट ओइना हंगाबनिना सि बखोइना करी हाइगनी माय वेट इज 50 केजी वेट हाइने नत्रगा 70 केजी वेट यंदराबा सो माय वेट इज 50 केजी वेट हाइदौने अदु वेट हाइबजे अखोइना समझल ले हारगसी पन्नदबिदा करी ओइना हाइरे अखोइना केजी जी गतंग हाइबने वेट से हाइदबिदा अदु हायंग क्वेश्चन खरा हंगदोरिबको नंगी केजी वेट पिरमगा मास पुथोकपा नत्रगा मास पिरमे हारगा केजी वेट कमान कन्वर्ट तौगनी अदु अमदा नैनसे सो नंगी अहानबदा सुम क्वेश्चन होटपदा फर्स्ट स्टेप ता खोइ केदोदगी हाइ तारदी अदु माना केजी वेट पुथोंगा होनबदा टू फाइंड केजी वेट करिगुमा नंगी केजी वेट से पुथोगे हाइ तारगदी अहानबा स्टेप ता केदोगदबा फर्स्ट स्टेप ता फाइंड दी normal weight in the sense that is in Newton दा ओइबा मागी weight to पुथोबा कमाइना weight have the करके माने using weight have the करके माना बा mg तबुद वाइसर g द स्टार मामा थमगे where सिदा कोइन इरिबा g star हाबजे it should be the acceleration due to gravity at that location हाबजे नंगे weight पुथोक तो रिबा लोकेशन दो से हाइट अमदा काखलगा न ग्रेविटेशन द हाइट डेप्थ नैना दोनी से हाउ हाइ जानो पिंक कौरी ए हम तो खुमुए को हाउ अबे हाउ
क्या रे acceleration due to gravity हाइरिबा weight पुथो हाइरिबा जगह दो अदुगी g पुथो height तो organa g h पुथो depth तो organa g d पुथो यारबा good once after finding this second step ta kg weight पुथो के हौजिक सिदा तारक तो इसे in newton दा तारा दौने in newton दा अदो अइना पामिदि kg ने so to find अइदि समदम अहामबदा normal weight पुथो हैबा normal weight पुथो मखा कुम बई ngak tang isa du ware som to hun ye ba to pa wai nang lo sa pa to pa wai okay to find kg weight housing newton da tab do ina kg weight puto ke hardi use kai puto to ba nangi kg weight hai ba z is equals to nangi normal weight w do ne g na divide to ba to ba wo sigi g je kai oi ga ba nangi g on earth surface sim kaw so ya de weight puto ba si nagri ba g do na karam ba g due to gravity at that location height to organa height ki depth to organa depth ki kg normal newton tar matung da kg weight puthok pada sinari baduna kanana divide tawdo ba g on the surface of earth so sida tarak to joren chuko shoiduna kg tara damne yani aba good so haiba kanda kg weight hayo adu unity kg oin lane now this sida based of question ma hola je let me write the question do ira again the weight the weight of an object amagi weight is 90 kg on the surface of earth yengo surface of earth magi 90 kg hairadi magi mass to 90 dum oiramane oiramoidro surface de kedawi se magi ki weight to hana putu weight putu kamai tani mg iba kanda mai side idu g surface orani mamde surface ki ni na oren magi mass haidi kg weight putu ngai da kg weight putu buda kedarani sigi weight sida kanana divide to deba g surface to na ada g da dum kangai ji daw leire haba so surface ki oina di on the surface of earth di if your weight if your mass is 50 kg then your kg weight will be 50 kg weight clear hoidro cha surface di zamane haba surface di your mass itself is your kg weight so aduna mana weight of an object is 90 kg hare weight pallaga 90 kg hairadi my kg weight ne ba adu sunagi earth ki surface ta so earth ki surface ta 90 kg weight piradi magi mass to 90 oiramani haiba ko sidai khangadawa and the friend the weight of an object is 90 kg on the surface of earth samak thamuko si ja question is very simple adu kg weight yahola kan question kitang lu ngai honar kadoba lu gi doba if it is taken to a height it is taken to a height equals to half of the half of the radius of the earth half of the radius of earth to the name as a puhat kreva then its weight will be then its weight will become I go option the period option number A 90 kg option number B 45 kg C the 60 kg D the 40 kg now let's solve this yengo hayeng question da si exam da hayeng exam da si question ja hangak pa kanda many students will choose 90 kg kho tawri 90 kho tawri ba satre sing gi losing na kari oide ba surface 90 kg oi hore that is mass 90 kg ni surface the mass to si data as de thoi lang no bane lang nangi surface da ma object to gi nangi mass to 90 kg oi ra bane adi surface 90 kg weight haradi my mass 90 kg ni hai ne tro adu 90 kg se mass oi ta man p answer is jo kg kg de loin pyramid mass ki wakal da khal le harga logic to bu ko
मास की वखल खले हरगा नंगे फना यामना हाइट हेंगलसु हाइट हेंगलक तारगसु रेडियस ऑफ आर इक्वल्स टू नंगे हाउ द रेडियस ऑफ आर हैवनी हाइट फनयाम वंखलासु मास से कैसु होंगोइदा हाइरगा नंगे 90 केजी थमदोरीबा अदुगी कंसेप्ट होलगा सी कंसेप्ट सिनरगा ए खो तौरीबा वन कंसेप्ट इज योर लॉजिक अमदी चुम्मे ग्राउंड की सरफेस मास 90 केजी ओइरे में ओइरबने अभी तारगदी नंगे अबव द अर्थ सरफेस r/2 लाप हाइट सिदजु r/2 वांखट पर हाइट सिदजु माय मास 90 केजी अदुम ओइनेबा बट सिदा पीरिबा केजी सिंगजे मान हंगिजे वेट नेबा मास हंग बनते सो सी केजी सिंगजे सम सम केजी वेट ने दे आर आस्किंग द केजी वेट सो केजी वेट पुतो गेदा कोई कैदो हाई फर्स्ट फाइन करी हागिबा नंगे वेट नॉर्मल वेट टू इन न्यूटन न्यूटन द पुतो गेदी यूजिंग mg हौजिक हाइट अमदा चतोरमिना gh gh क्या ताने मास 90 ने हाबजे होंगोय मरदी सरफेस 90 होरबने होंगरोय दौने बट g दी होंगदौरिदन g एना हाइट से हो हाइट की नंगे r/2 हाइट से r गी r का हां अस आई सानु पेजे मथी फाइनी हम तौले होको न मैडम का होत के यारोय anh làm nhầm kìa quá lớp đủ rồi नाउ फॉर अदुदी gh इबा कांदा gh की दे कोई फॉर्मूला नि लेबा g हारगा 1 minus twice h by r इबा मा अमन g हारगा 1 plus d by h by r को होल स्क्वायर करम बसिना ने हारो सिदा अहान बसिदी एजुम्पशन लौग्रबने सिदी नंगी h तो much less than r सिना दोबा सिना नंगी h सुना comparable to r हाइदी r का comparable ओइरा कान सिना दो से as I class explain तौग्रे. So since height is given in terms of r/2 pyramid, we will use this, not this. अब जो g है वो g है ना कि r की सरफेस की जिनको g है divided by 1 plus h by r h to r/2 नहीं so r/2 r का होल स्क्वायर सिंप्लीफाई तो उधर 1 plus 1/2 दी क्या नो 3/2 3/2 2 मतलब सक रहा क्या तारा नहीं 4 तारा नहीं so 4 by 3 squared in 9 g 9 के सीधा कल क्या तारे 10 that is 40 g तारे 40 g g दे सीधा सी नरी भाई g on the surface of r नहीं लोई खंगे को क्लास ने रे to find kg weight अब जे kg weight पुतो क्या डी कहते बता बा kg weight equals to कई का मानना नहीं मागे normal weight in newton दो दा g on surface की दो डिवाइड करो अब देखिए ना कि kg weight weight in normal newton दे 40 g ताकरे divided by g on the surface of earth g का नगरे हर का लास्ट 40 ताने so this is 40 kg weight अदो मान weight दी पलमद्रे kg दंग पीरे कैसु कायदे चनबीनी so the answer is 40 kg very important very simple but किनंग tricky होय भाई तारे तार मार्क थमजलु very important यार बस ही बहुत यार इन लौरगा सब कोई क्वेश्चन खरगा होत के क्वेश्चन अनी का होते क्वेश्चन अनी का मैं नॉर्मल क्लास था द बेच खरदा होलौ दबगी को अदु होलम मतम अतै एक्स्ट्रा खर होथरगे बेच अयामबददि होत्रे मॉर्निंग की बेच मखैदा आई इजी वे की कांसेप्ट सिम होलम द्री बदुननी से नियर 2021 दा हंगिबा क्वेश्चन अमा स्केप वेलोसिटी द कोने लॉन्च तौतार गदि माजी इसके आर्ट की ग्रेविटी स्केप तौरे हरगे इंफिनिटी द ले पुनी हवनी इंफिनिटी योगरनी करिगुमा नंगी स्पीड टू स्केप वेलोसिटी दगी लेस ओइरादि इफ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज लेस देन स्केप वेलोसिटी अदे कैदवनी नंगी इंफिनिटी योररोय हाइट maximum height ama ba yawrure harga amuk tarakhrani haba then how to find this maximum height sir ne irame to solve question based on escape velocity and nagi maximum height the escape velocity sida based abo question ho kya haradi use energy conservation si no high gre अब देखो ये क्वेश्चन इरागे अदुग सॉल्व तौरजी क्वेश्चन
a particle of mass a particle of mass m is projected with a velocity v, which is equals to k times of ve. See k is less than 1. K is less than 1 hardy yam chamba example the 0.5 and lower ne. 0.5 to 1 by 2 ne, 1 by 2. So that is ve by 2 hai never. In other words, man p velocity is less than scale velocity hai ningi ne, less than scale velocity. Where v is scale velocity? Scale velocity from Earth surface. Earth surface tagi nangi escape tongai one of the daka oiba scale velocity do. Scale velocity. You're say simple na dum khangnar poni da. Good. Adi mana kar hare a particle of mass m is projected with a velocity yarava from Earth surface have mabamu. Check one se aap se lag gaya. From Earth surface, and Earth surface tagi higher velocity is the mass launch tawre Earth surface. Where har ganagi ve is the escape velocity from the Earth surface. Yarava I see error ve is symbol dun khangna ro. Noi hana sillo bazing adum sillo ezu gai den. I e vital. Now the mana kari hange the maximum height the particle can reach from Earth surface is areva. Earth surface agi maximum the mado particle to kadai bau yowang ngamgadagi have. Option number A r k square divided by 1 minus k square. Option number B r haraga k by 1 minus k ka whole square. Option number C r haraga sida k by 1 plus k ka whole square. Option number D r square k divided by 1 plus k. Option number D is impossible. Aye exam dane nagi concept logic khara sinare haraga question max all question mag yaad raga zo out of 45 question nagi some 20 question bawudi you can cancel at least one or two option makai nang lauthok pa yani you can cancel some options by using nagi some concepts logics aina sida D kai do bai oi bai yaroi do no have do manoi khallu si mayam jing jema koi hayeng revision da tawani tricks revision da takani not now foundation da nangi concept strong ina bo hono any sort of question hot na ba attempt on ba ki dana ba hono so nangi hayeng speed thuna na ba tricks na ba answer dang check tawre har ko na ba that everything will be done in the revision not now I hoje kam ta taw hai sida ina D kai do bai remove tawri ba si option je you decide kai do khallu kam tang particle of mass m is projected with a velocity v है suppose r के surface देखिए सही काफी दो इन्हें v is equals to v k times b से कोई less than v ने कोई खंगे मान p रिवर k less than 1 है mean obviously it is less than v since it is less than v it will never reach infinity level ama yaurani से maximum height है जगह में अदुगा नगी जगह object मुक्त तारक तोरे से maximum height से पुतो है बनी एनर्जी कंजर्वेशन पालो हाई रेसो में क्वेश्चन होत केडी सो सी लेवल जो 1 थोलो मैक्सिमम हाई के लेवल जो 2 थोलो मैक्सिमम हाई तदी ऑब्वियसली स्पीड 0 होइदे यारोय इदगी हलकदौ नीना स्पीड 0 ओरमद्रदी मथक कदम कागी रोइद्रो स्पीड 0 ओरबैनी सिदै हेना चत्रे हाइजे नाउ अदुइ ताडे के दौरे बाय एनर्जी कंजर्वेशन करी हारिबा टोटल एनर्जी 2 दुगा टोटल एनर्जी 1 दुगा मानम थोय 2 की टोटल एनर्जी है 2 ददी पोटेंशियल लाइक काइनेटिक दी 0 नहीं अदो E is पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इनिशियल की सरफेस की पोटेंशियल प्लस काइनेटिक 2 ददी वेलोसिटी 0 से तो रमेना काइनेटिक इज 0 पोटेंशियल की फॉर्मूला दने माइनस GMM डिवाइडेड बाय मागी हाइट 2 R मचा दो सेंटर दगी ओन का दौनी को सी R दो ना अदो सेंटर दगी दिमाग से क्या हम लापे सी भाव दी रेडियस लेजर है सो सेंटर दगी पॉइंट 2 हो गया आपका क्या नो R प्लस हाइट्स आई डायरेक्ट ई रहे U1 hai kana surface here and minus GMM divided by nagi my the radius R plus kinetic the half m my V the kano K VE ni so it is half m V squared K VE ka whole square. Sidangi MM ka san nagro
amana side yung answer piba kanda g m guys yaw de r gi term da loi even awdi we know hairo ko na khambam lay absida escape velocity have the kai gamane twice gm by r gamana bane adi sidana squaring tawrutar di twice gm by r gamana rani adi ani makta yaw gm by r smaina harap yaw bani na gm by r ja koi kama ibe ani escape velocity square divided by 2 2 map asomda thang raga so 1 sida sinjale har kanda in 1 da sida simplification ngata ngai re ko gm by r plus height se r plus height se ai sumai saramba yabrang aida aina hojik irize gm by r ne ada aida gm by r do sida hapo ada hapse liba r do mathak da lawtho asu kai didana se ado itardi gm by r do na kai ke manaraba v square by 2 tahale ada mathak da kana kana leire r ama leire ado makha da hana yauzan ba r plus height kai su kai dekho se simplification minus gm by r is direct v square by 2 tazare aduga last asomda squaring tawrakanda k square v square v square divided by 2 2 loi ka kidore v square loi ka khre am chambana gi relation am ta dore which is minus r by r plus heights equals to minus 1 plus k square sidagi di simplification du yangu karino pudok toise heights putu habani heights putu gedi r plus heights to right side kro aduga left lom da adi makha da law sigi pull up to na makha rom da law so implies kama ibe are de minus r by harga minus 1 plus k square do malai aduga si r plus heights na mathak sakre heights putu ge hierarchy heights samaga r do som da law adi minus r minus of nagi r minus 1 plus k square minus minus easy am phajade pare last sem doksi minus r कॉमन लो और इसी क्या तानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का minus 1 plus k square plus 1 कैलकुलेशन इशाना तो जरो को ये कैलकुलेशन से क्या तादे हर 1 1 कथन रे लास्ट क्या तावे minus r k square divided by minus 1 plus k square सुमाइन इबदे फजदे माइनस ना होबजे ऑप्शन तो यावदे अदुना मथक सु मखा जो माइनस लोइना मल्टीप्लाई तौरे हरगा r k square हलगा सोमदरा नगी 1 minus k square हनबे यानी 1 minus k square. So 1 minus k square. So this answer. अभी क्या तारे r k square 1 minus k square. This answer. यार अब यार NEET 2023 अखो ये मणिपुर की वैना तोंगाना एग्जाम सिन की बेदो इरांग मरम औरगा कोई मणिपुर की दे तोंगाना मयाम का पुंदना था गेम निखर यही होगा NEET 2023 हारिबा मतम दुगी मणिपुर की क्वेश्चन दा हंगिबा मको स्केल वेलोसिटी द बेस तोबा NEET 2023 अखोई मणिपुर की वैना सिंगिबदुदा मान हाइजे के नो से कंसेप्ट तो सरना एक क्लास जो कोई हायर में करीगुंबा स्केप वेलोसिटी द लॉन्च तौतार दे मादो आ इंफिनिटी दे उंगी दे हाय स्केप वेलोसिटी की पी उरगना v लेस देन स्केप वेलोसिटी ओरगना इंफिनिटी यौंगा मरोय मैक्सिमम हाइट फो योरनी अदु कुमानी आइना होजे खोट खरे अदु करीगुंबा स्केप वेलोसिटी की साउरगा स्केप वेलोसिटी की हेना यांग स्पीड में लॉन्च तौगी तारगदी कदोरनी डेफिनेटली सी इंफिनिटी हारिबा जगह से दिले परोय हेना यांग लामिन हेंदो जखिरोइद्रो अन कदाई लेपदो बेसे इंफिनिटी द लेप्तरे अदु खरा हेंदोगा हेंदो स्वाइ द लेप्तोरे अदु इंफिनिटी दगी हेना चावददी अतोप इंफिनिटी म कवने बजे क्यारबा सो अहान बगी ve ना लेपिबा जगह मफम इंफिनिटी हाइरबा इंफिनिटी दु द लेप्तरे अदुबु ngसागी अतोप इंफिनिटी अम द लेप्तदी यारोय हानगी इंफिनिटी दु दगी चावबमा अदुना हयें करिगुम माना स्पीड तो ve दगी हेना चावबा स्पीड म पीरगा infinity the velocity puto hierarchy zero take the high ganu haba so the scale velocity of a body on the earth surface tagi yaar bana ये scale velocity is 11.2 kilometer per second haba if the same body ko is projected upward with a velocity
with velocity 22.4 kilometer per second. 22.4 kilometer per second. हांगे double ने उसे double of the हाना दुगी twice भी नहीं. Twice भी हर होते नहीं कोई दी value दिसी ना रोए. नहीं तो यम लूबा मांगी ने बा. The velocity of this body, the velocity of this body at infinite distance, at infinite distance from the center of art, from the center of art, center of art तक आम लाभ की वजह जगह था इसमें तो infinity था. The option द मान पी दो इसे. Option number A 11.2 root 2 kilometer per second. Option number B 0. Option number C 11.2 kilometer per second. Option number D 11.2 root over 3 kilometer per second. यंगो सिदा ऑप्शन द 0 हाइबा मजु यावबनी नने अखोइना हाइग्रे इन्फिनिटी ngसागी b e ना लेप b e गी लेफम इन्फिनिटी ददि लेपरोय अदु लेप तदि यादमे काजे लेप तनो अदुदगी हेंदोगा अदुदगी हेना साव इन्फिनिटी अमदा अदु अनिमक इन्फिनिटी ngata नत्रो इनफाइनाइट डिस्टेंस ngata नत्रो अदु इनफाइनाइट द लेप तोरमेना सिदा 0 खोटपदने देयर इज नथिंग रॉन्ग अदु तवुददि नंगी हयंग मरे ये तारे ऑप्शन ददि नोगी हयंग की ददि सि सुइ पिरोय हयंग माना 0 से लाल हलकप कांदा नंगना फजना नंगी आर्गुमेंट दो तव हाइतारे मंदी सिदा इनफाइनाइट से प्रॉपर्ली डिफाइन तवदबनिना v ige lefam infinity ददि लेपरोय खंगे अदु infinity दगी हेंदोपा तोपा infinity अमदा लेपुनी सो 0 ओइगनी सिगी नंगना 3 तौरिबा infinity दो next की infinity सिनी हाइरगा बदो बखोइ सिदा मरियत प तंबनते बखोइ दे नंगी लेक तंबनी concept तंबनी अदुना let us not do it exam की थबंग ने दुना exam लोर मतुंगी अखोइना हाइग्रे एनी नंगी escape velocity maximum height अदुदा बेस तबो क्वेश्चन हंगादी energy conservation सिनो हाइग्रे अनदि twice be the launch तौग्रे काखलुदोरे हौजिक सिगी infinity हाइरिबा जगह सिदा अय हौजिक velocity खरा दि लहेंदोरे not equal not 0 0 हेक्ट लवरोइसे अदि level 1 2 हाइरो level 1 level 2 अदि केदो तारे by energy conservation अदुम पालो हाइग्रे total energy at 2 दुगा total energy at 1 दो मानगनी 2 हाइरिबा जगह दा total energy दी potential plus kinetic zero 1 दसु potential plus kinetic zero infinity द potential दे तुम 0 नहीं तो kinetic दी हौजिक 0 हेक्ट हाइर नो हाइबा हाइर नो बको अदि कमा हाइ तारे नंगी kinetic दी half m हार गसगी v infinity की square which we are going to find out u1 दे कइनो u1 is the potential on the earth surface so minus g m acha divided by नंगी r की radius plus kinetic दी half m v square that is twice v का whole square अदि सिदे के कको यारे m acha macha का खरो और half v infinity square equals to minus यों सिदा यावर g m by r ममांगे क्वेश्चन तो होत छिदंग आइरी अदुना डायरेक्ट इरागे सी v स्केप स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 तागे बनी प्लस सिदा क्या तारे 2 2 जो 4 तारे 4 v स्क्वायर बाय 2 सिदगी यों से 2 2 2 लोय का करें अदे v infinity स्क्वायर क्या तारे माइनस v स्क्वायर अमगा प्लस 4 v स्क्वायर अमगा तो 3 v स्क्वायर तारे so it is 3 times v square adina na v infinity pudoge root loksalaga root 3 times v square so escape to ge v ni adi mana p is again no ma the value numerical in p bani numerical the v do mana 12 11.2 p re nang launch story ba velocity na 22.4 hai re adu twice na trose adu ni coin policy so the answer will be root 3 times ve do mana 11.2 p bani na 11.2 times root 3 kilometer per second is answer यारबो 0 खोलो नो 0 मरे ये पा हाइगा सातरम खेना 0 खोलो बट मरे ये नगे तार इस माइनन खोलो सिबा उदान नगे नॉर्मल क्लास अखोइना ताम बसिंग तो नी लोइरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो वर्क होरजे नाउ लेट्स स्टार्ट नगे सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन फजब जब क्वेश्चन खरे नैनगनी को सरना क्वेश्चन खरे दिखन गले अखोइ अनौबो बुकलेट अरीबो बुकलेट अनिमक्तगी को सो लेट्स स्टार्ट यानी गबो यार बाबा हौरजे दुदि हौरजे यो अखोइना हाइग्रे अयंग क्वेश्चन द बाय चांस क्वेश्चन जे सुमाय हंगाबा अखोइना इरिबा फॉर्मूला नैनरिबा रिलेशन मयाम जिंगजे
न्यूटन की लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दो, न्यूटन की लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट इज फोर्स की इक्वेशन, न्यूटन्स की लॉ ना हारिजे कइनो मास अनि की मरक की फोर्स से g टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर नी, दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो तवे हबा अदा हयेंग क्वेश्चन दा माना सुमा हारे न्यूटन की लॉ से लालम में अकोई किदंग मॉडिफाई तौरजे हारे जो नत्रग नगी अतोप नगी प्लैनेट अकोई कहता सोलर सिस्टम अमदा अतोप सोलर सिस्टम अमदा अकोई आर्ट की अकोई सी सोलर सिस्टम जन तब अतोप सोलर सिस्टम अमा खक्ता नगी फोर्स बिटवीन टू मासेस से आर स्क्वायर डिपेंड तौबगी महुत्ता सम आर टू द पावर n दा डिपेंड तौरमे से n टू एनी वैल्यू 2 हो बिया 3 हो बिया जनरल होइना स्क्वायर ना तब हम डिपेंड तौरमेबा से आर दा खक्तंग डिपेंड तौरेगा हारोने अदुगुंबा केस तदी माना हयंग हंगेबा नंगी टाइम पीरियड तो आर गा कमाइना मरी लेनगनी आर स्क्वायर डिपेंड तौरिकांददी केप्लर्स नंगी थर्ड लोना t स्क्वायर हाबजे आर क्यूब दा डिपेंड तौबनी अदु हौजिकि आर स्क्वायर डिपेंड तौरमद्रदी फोर्स मसामक तो आर स्क्वायर ओइदना आर खक्तंग ओइरम तारदी 1 बाय आर ओइरमदी माय वैल्यू सिंग नौना लोइन सेंदोकिने सो सुमक द बेस तो क्वेश्चन अमतंग सर वोट के सम हाइपोथेटिकल ओइबे सिचुएशन अमख मान हारे सिदा नंगी द ग्रेविटेशनल फोर्स between two bodies body any के मर के is directly proportional to 1 by r instead of 1 by r square यार वा न्यूटन की लॉ तो फॉलो तौदे सीधा where r is the where r is the नंगे distance between the bodies into की मर के distance to then the orbital speed of the then the orbital speed of this force सिगी फोर्स सिगी नंगी orbital velocity दो in circular orbit सर्कुलर ऑर्बिटल लेगेदा बनंग ऑर्बिटल वेलोसिटी दो is proportional to है ये कनादा प्रोपोर्शनल होएगा कि हवा प्रोपोर्शनल टू क्वेश्चन जी क्या अंदारा भी हूं फोर्स की नंगे वैल्यू दो होंगे दो रे फोर्स की रिलेशन दो होंगे दो रे अदे ऑर्बिटल वेलोसिटी दो कनादा डिपेंड तोई 1 by r square डिपेंड तोई r to the power 0 that is independent of r दा डायरेक्ट डिपेंड तोई नंबर डी दना 1 by r ऑर्बिटल वेलोसिटी ngasi अखोना टाइम बदा हारो ऑर्बिटल वेलोसिटी कई माना की बा रूट ओवर gm by r हायरम बना द्रो कोना हायरम दाइने हायरम द्रो सनगी r से डिस्टेंस माना सिदा r अचौबी इरे ऐसिदा r मचा इरे नो इशू डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज सुनी अदे करिगुम नॉर्मल लिए कोइना करिगुम फोर्स तो 1 by r स्क्वायर दा डिपेंड तौरम तारगदी होरेन कइदो दबा 1 by r स्क्वायर दा डिपेंड तौरम r दोइदे मचा इगे माना अचौबी इबसे कोइ नुंगाइते r अचौबा सिदी कैपिटल r सिदी रेडियस ऑफ द आर्ट के कोइना हे एक सी नगरमिना नुंगाइते हबे समाने अइना स्मॉल r इबदो माना सिदा कैपिटल r इबनी फोर्स 1 by r स्क्वायर डिपेंड तौरम तारगदी v नो तो कनादा डिपेंड तौरम दोबा 1 by रूट r दा डिपेंड तौदोबा फॉर्मूला दो सिने तार केबदो हौजिक माना फोर्स की फॉर्मूला दो चेंज तौथोखरमिना ऑर्बिटल वेलोसिटी की फॉर्मूला दो चेंज तौदे यारोयबा न सुंबा कांदने नोय फॉर्मूला चिंफा पुबै कानादबजी फॉर्मूला चिंफा पुरदी डायरेक्ट हेक्ट ऑर्बिटल दो 1 by रूट r दा डिपेंड तौबनी अदुम हाइनिंगा कने बट ऑर्बिटल कमाइना वेलोसिटी कमाइ पुथोकी खंबा सात्रदी लाइन अमा खक डिराइव तौरदुम ताराने ताहाजे सपोज नंगी फोर्स बिटवीन टू बॉडीज हारे अदुगा नंगी देन द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ दिस फोर्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट यार बा मास अमा खक नंगी सिगी सर्कुलर ऑर्बिट हम सतोरे याम संबदा से सम आर अमन आर ने लौरो अमन नंगी सैटेलाइट अमन ने लौरो ने यार बा गुड से मागी मास एम अचोबा लौरो सी मास मचाज एम अचा हारो सिदा उंग दोरे ऑर्बिटल वेलोसिटी माना ऑर्बिटल उंग दोरी वजे सिंस इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट नरा कंसाइ खोने डिराइव तोरम बदु सी एम मचाज हार जे यार बा सी एम सैटेलाइट ओइना बु हारो ने एग्जांपल की ऑर्बिटल हागदी सैटेलाइट की नैनर मिदना खोइना सिंस सैटेलाइट इज इन अइना सैटेलाइट हाइरमनी को बॉडी दो सर्कुलर मोशन द लैबनिना अदै माना पीरिजे सिदगी सिबागी अरापजे आर मचानी माना सिदा आर अचौबा हेक इरे अइ नुंगाइते बहुत को आर अचौबा उहेल लोइगे आर मचा दु मोहनगे अइना आर मचा इरिजे मागी आर अचौबजे चमान सिंस सैटेलाइट इज इन सर्कुलर मोशन द लैबनिना हाइरो देयर मस्ट बी एन एफसी लेबम थुई यार बा एफसी देयर मस्ट बी एन एफसी सेंट्रीपिटल फोर्स लेते यार बा सर्कुलर गिदे देयर मस्ट बी एफसी centrifugal force लेते यार and this fc is provided by
सिगी सेंट्रिपेटल फोर्स से कनान पेप तो बा इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रिपेटल फोर्स से कनान पीनी ग्रेविटेशन फोर्स ना ग्रेविटेशन फोर्स एफ जी सो एफ सी दुगा एफ जी दुगा माना हलो अदुगा नंग सिदा इचम चम रिलेशन ताजरा ने में सोम दोइन था सो कमाई होतो बे सिदा so implies that the fc बुहारडी सी न्यूटन की लॉ की वरी नते mb स्क्वायर बाय r ने अदो fg सिदे हौसे कदौदोरे ngसागी g m m अचौबा डिवाइडेड बाय r खक्तंग ई दोरे मरमदि r स्क्वायर दा डिपेंड तौद्रेबा मान r खक्ता डिपेंड तौय हार 1 बाय r दा डिपेंड तौरे द फॉर्मूला दु सुमान कन्वर्ट तौई दोरे r r लोय खक्तंग नगरे सिदी v दुन ऑर्बिटल नी ऑर्बिटल की खनबा o हापो मास का दे कांस्टेंट ngaktan इधर से यारसे अदे v नॉट स्क्वायर हाबसे g m दा इरमे अब VO हार्डी रूट ओवर GM तारो इधरो which is independent of kana R. So option क्या तारे हैं? So orbital velocity now becomes independent of R. R दा depend तारम रे. And then नोइना मुख हल्लो हाई exam दा करेंगे 1 by R हाई बे मोता R to the power of n हर का any general ओइन हंगा दी कमाई होत कनी that you will think. यान ताकत हो से? Good. So माइनो question हंग भाई आई. Next question अमा नहीं तंग आई होत की game. Okay now. Next question. Yung suma hare se ai statement oina ko na gi diagram mun yeke. Mass am khale re na easier se suma hare se. A body of mass m is divided into is splitted ko na into two bodies of mass na gi mx x times है x times m amana x amana nangi body whole mass m oirambadagi body amana nangi x times m laki tari lem hoba part to gi mass kya tani m minus x m oiroidro adi nangi m common logthoega 1 minus x times yarba good so x m n 1 minus x times m a body of mass m is divided into two bodies there are two parts two parts of mass x m n 1 minus x times m and the kf at a separation of nangi r distance d है जे r है जे d distance separate और का नहीं तो थम्मे piece ani thuaire piece ani thuaire amana nangi mai masu क्या होरे xm होरे amaduna क्या होले 1 minus x times m होले मखोई नि की separation से क्या होले बा d होले good now करी है बसे nangi find the value of x find the value of x for which the gravitational force Fg between them is maximum मखोई ने की मरक तक ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम ओहेन गेडी ना की पीस तो क्या क्या दा थुगाई दो हबा यार बा कमाई थुगाई के हबा यान दरबा से गुड नसुम क्वेश्चन जो होत के हरडी नंगी फॉर्मुला ओइना खंगस बै नंगी मैक्सिमम फोर्स हंगे हरडी अनि दो तंखाई दा एग्जैक्ट हाफ दा डिवाइड तों फै अदु कमाइन लाकने दु येंगजी फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which fg between them is maximum सिदगी स्टेटमेंट ओइना जो खंग होबा स्टार मार्क थमाउ थ्योरी की टाइप जो खंग हो है एग्जाम दा हंगादी डायरेक्ट स्टेटमेंट जो कुंबया ना हौजे नंगी सिदा ग्रेविटेशन फोर्स हरडी fg हबदी करी के माने g times mass ani दुगी प्रोडक्ट m1 m2 mass ani दुदी क्यानो x times m अमगा अमना 1 minus x times m अमगा डिवाइडेड बाय मखोनी अरापा d स्क्वायर अखोना हागरे एनी नंगी वैल्यू दा मैक्सिमम नत्रगा मिनिमम वैल्यू पुथोके हरडी टू मैक्सिमाइज fg जे मैक्सिमाइज तौगेडे होय कैदो हागेबा मैक्सिमम नत्रगा मैक्सिमाइज नत्रगा मिनिमाइज तौदोरिबा क्वांटिटी दो अद डिफरेंशिएट तौरा जीरो ताहालो कना के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट तौदोइबा वेरिएबल दुगी सिदा वेरिएबल से कनानो मबानी अराप डी जी होंगो हाइदे x टू हतनी होंगंदोइजी x तो क्या वैल्यू क्या क्या ओरकांदा हबनी आदि पार्ट सिंग दुगी मास क्या क्या ओरकांदा फोर्स मैक्सिमम ओरकादगी हबनी x is variable so dx 0 so df by dx should be 0
differentiate tawse differentiate togan constant makai g constant ni m yauriba m square constant ni d square constant di differentiate tawse yahon nade of the dy dx of kana le hoye de x ka 1 minus x अंदर multiply तो सलामु x minus x square यार अब x minus x square से differentiate तौदो रहे सी जीरो था लो और सी constant में आम जिंग सी दी हो रहे हैं असों द जीरो का पुन करका नमाज जीरो चलन करो सी किधंग differentiate तौरो dx by dx से क्या नो 1 minus x square differentiation twice x equals 0 अब x क्या तार में half that is to get the maximum force between them they must be divided into equal parts that is to get maximum fz को to get maximum fz between the parts pieces between the pieces they must be divided the mass should be the object को ना original object तो और body तो must be splitted into two equal halves must be splitted into two equal halves यार वाह two equal halves मतलब दी मास अनी तो अमन m by 2 और मनी अमन तो m by 2 और मनी तो x की वैल्यू हाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार अबू यार अबू यार अबू नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्म लागे ताप तमस ई रखे two spares देखो इनकी थ्योरी मचा मई ताक तोरी को जे एक्स्ट्रा नी बट खंजे में मांगजे बोलाइते स्पेयर्स ऑफ masses 16 kg mass 16 kg and 4 kg are separated by a distance of 30 meter on a table then the distance from the spare of mass 16 kg at which the gravitational force net gravitational force becomes 0 net gravitational force 0 tahanba tarakadaba aduma jaga do isam sam neutral point ga kawi electrostatic to oina khoi yam kupthana nei narakani gravitation da yam nei nadre so nangi neutral point thiba kada waida leiramgani everything will be discussed in electrostatics यंगो सिदा कोई थ्योरी में हागे वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी जनरल होइना सिदा नंगी मास m1 को लेरे m2 को मास हम लेरे अब जगह अमा खक सपोज नंगी स्वाइदा जगह हम लेहलजी सपोज सिदा थमियो मास m हारोने m हाइरिबा जगह सिदा if m हाइरिबा नंगी मास है m हाइरिबा मास सिदा m1 नसु अट्रैक्ट तौरोइद्रो ग्रेविटेशन फोर्स हम लानी लेट अस कॉल दिस f1 2 नसु अट्रैक्ट तौगनी लेट अस कॉल दिस f2 since the attraction on mass m by m1 and m2 are opposite then adu nang na jaga ama thiba yani you can find a point where net force is 0 the point where f1 and f2 the force f1 and f2 are numerically equal opposite oinare numerically equal ore adu net force 0 suppose mapani ki separation se d ne lower se let d be the separation between the masses m1 m2 अब नंगे सिगी अरापदन r1 हारो सिगी अरापदन r2 हारो अब इसे डिराइव कमाई तो कि नियम मसाम ताम के तो रिजल्ट डायरेक्ट रखे टू मेक नंगे f net 0 f net equals to 0 on mass m से net force 0 तहन की हरडी कदम दका हुए देन अदोई तागदी देन अदोई तारगदी नंगी f1 जिगा f2 जिगा मानदौ नत्रो मैग्नीट्यूड वाइज मानदौ ऑपोजिट ओइरी हाबदी खंगेदन सिदा the force must be equal and opposite diagram दगी खंगे मानदौ नि मैग्नीट्यूड अदु कांदा तंग नेट फोर्स होइदोनि force हदि के माने g times mass अनि की प्रोडक्ट दैट इज m1 times m divided by r1 square equals to g times m2 times m divided by r2 square अदि g का खरे m का खरे लोइन का खरे लासा के दावी
m1 by r1 square equals to m2 by r2 square, m2 by r2 square. So also see the equation of phange equation amana r1 ga r2 ga pulaga d ta dong natro equation ni phange. Two unknowns, two equations, you can find the value of r1 and r2. Actual calculation में खितंग लूना थोकनी सिदा अदुन आइना कइदौरे सर ना सिदा derive तौबिरक पीरे. Just remember this extra oina. R1 will be nothing but root m1 times d divided by root m1 plus root m2. And R2 जैसे simplify तौरकन तारकपनी. R1 तो ताकि ताड़ी obviously R1 the root m1 हाई ताड़ी सिदा R2 this question root m2 हारमनी d divided by root over m1 plus root over m2. Use this directly. नंग हयंग सिदा value पुथोके दे value तक सिंजेलो होलो को सी दे नंगी माने सिदा value ओइना पिरामिना अराइबा value पिरमगनी formula सुगं खंगदना जो होची डायरेक्ट होत जो लाइन नि माने value पिरामिना यारबा होत प लाइन नि होची अदु formula जो खंगौरो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दे हंगदोइने n net potential at a point where f net is equal to 0 हायरादी net for 0 एव जगह दे द potential पुथवाडी that is at नगी location of kana m अदि net for 0 ताबा जगह हाडी m न लई जगह से नत्रो हाइरिबा जगह से मागी net potential क्या ता हाडी v net हाडी v दी स्केलर नि ना डायरेक्ट नगी 1 दगी लाखपा 2 दगी लाखपा नि तो प्लस ताउनी 1 दगी फॉर्मूला क्या तानी माइनस g m1 डिवाइडेड बाय r1 तानी प्लस माइनस g m2 बाय r2 अदि r1 r2 की वैल्यू तो सिंजल लकांदने याम फजबर रिलेशन में तादोरेबा माइनस g बाय नगी मबानी की सेपरेशन अदुगा सीधा रूट ओवर m1 प्लस रूट ओवर m2 का होल स्क्वायर खमंग अमरेंगो फॉर्मूला जी अहान बदे योंगो फॉर्मूला पांदबी होची आई फॉर्मूला पांदरसु तो माने पीरिबा वैल्यू सिंग जिदी perfect square ngakta जो होय line hot pa yadau mali do hola ko sa before applying without applying formula and also after applying formula animal yengsi hairo sida koi central mass putho pa gi formula do confuse la kanuko m1 m2 haraga se mabani ki separation d oire then central mass ni m1 de arapa r1 m2 de arapa r2 central mass se kamai hiba m2 हर लाखिबनी opposite m2d divided by m1 plus m2 हाई गिवन central mass की दना r2 हाई कांदना m1d divided by m1 plus m2 so sin this is for central mass सिदी central mass ना तेबा central mass ता मागी net for 0 ताने have a light तेबा यागदरा so central mass ना ते so do not get confused between these two formulas before नगी formula without formula तो hot चीज है माना कहीं हाई नो से सिदा नगी 16 kg है वो अमल ले रहे हैं स्वाइद नंगे 4 kg है हम ले रहे हैं सपोज स्वाइद ले रहे हैं खलो यार बस 16 दई खर लाप जगह दा लेगनी 16 kg दई दे लाप थोक खिनी को कई दो बई लाप थोक तोइबा 16 kg से ना मास साउबे हेले ऑप्शन हाना गेस तौ तमजिरा तम मोइसे से रिवीजन द तोगे रिवीजन द तोगे एवरीथिंग विल बी डन इन द रिवीजन मैम दे हौजिक गेस तौ वइन चखरनी अब कांसेप्ट क्लियर होइगु हागरे सो फॉर्मूला ट्रिक्स आई कोन आदा ताओगे माबानी के सेपरेशन तो क्या ने हायरे 30 है गिरोना साइड 30 मीटर हाई दाने सेंटीमीटर ओ मीटर 30 मीटर 30 मीटर नहीं अब दिनगी सिदा लगे तो मास में m मचा हायरो सिदा की सिबाव अराप दोई पुदो पुदो नहीं लेट अस कॉल दिस r दंग इरगे सिंबल याम या होल रगे अब r वही तार सी लेम हो बुदु क्या तानी 30 माइनस r तार होइद्रो अनमाइन वन होची r1 r2 हाय रनु नगी है न्यूमेरिकल वन होके हरडी गुड अब तार सी खंगर मतुंग दे हारो नगी f at mj net force हो 0 ताहन गे हायरबनी ना क्या कना कना की फोर्स को माना गदोबा से f due to c 16 ना पिरको फोर्स लेट अस कॉल दिस f1 4 kg ना पुरको फोर्स f2 ना net fm तो 0 ओयरनी हायरबनी ना f1 के f2 को माननी हायरे the f1 से कइनो g times mass नि के प्रोडक्ट दैट इज 16 times 16 into m divided by मखो ये अरापा r square equals to g times 4 into m divided by मबानी अरापा 30 minus r का होल स्क्वायर अभी क्या ताने हारो जी एम लोई कख रहे हैं कई ले होते बस 16 बाय r स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बाय 30 minus r का होल स्क्वायर ये वो परफेक्ट स्क्वायर ngakta नहीं नसीदी कई तारे हैं तो 4 नको कख लो 4 पर स्क्वायर रूट लोई लोग थो स्क्वायर रूट लोई लोड इसी 2 बाय r तावरनी असोमदर नंगी 1 बाय 30 minus r तारनी अभी डायरेक्ट तुम सीधे तुम तार हैं कैलकुलेशन हम तुमने दरजू
The cross multiply chana ro 2 ne 60 lai re minus 2r equals to r tar hai. 2r som sa kita 3r tar ni 3r equals to 60, so implies r will be equals to 20 meter. Answer is 20 meter. Formula ong panji akoi formula ji chumi chum de verify tauji, or using the formula I use r1 duni pame ji r1 equals to root times of m1, root times m1 di kano 16, d di kano 30 divided by root over 16 plus root over 4. Root 16 the 4 tar hai, 4 into 30 divided by 4 plus 2. 4 plus 2 the kano 6. 6 and 30 the divide 35. So 5 4 are 20. Chamana tai ko ja. The calculation ko pa dum yare. Calculation ko pa yabang ata jo pizza kan, so don't worry. Potential की जो क्वेश्चन हम होला जी NEET 2023 ओरंगनी से ना NEET 2023 रा कइनो अदो हंगबनी से पोटेंशियल की से पोछि फॉर्मूला डायरेक्ट पांजे से ना नतदि सिदि हम सांगदोखरानी पोटेंशियल हम पुथोक लेयादी यार आर हम पुथोकपा पोटेंशियल हम पुथोकपा दि सांगदोखरानी डायरेक्ट फॉर्मूला पान डायरेक्ट फॉर्मूला काय लेख रगे कदाई लेख रगे Sana sai khanggat lambani kadai de lek rahe. Good. Page number 211, question number 24. Sir, don't question ये रखे, don't worry. Page नong hanguranu. NEET 2023 sina Manipur की दना त्रे. Overall की कोई नोया था की तब दुनी. Two bodies of mass mn. Sir की लेग से क्वेश्चन हम साना बनी को. Sir की मामा की लेग तो जो क्वेश्चन हम साना बनी. नोया फजनो होपी दबाई नहीं. Sir की मामा की अहानबा एडिशन दो. Sana laik takpa hek haurak pada apne laik phong dringai di hauna sina gi bo question myam jing do laik phong ka da ithupai wane question sim do kano tawde ko am ta ya nau nam da jan de adu gi booklet gi question anta ni question am jana bani mena fajana pabi da ba myam de matam da khoina phau drimin hai tare ko noina masak khangdri ba thaja bidri min na ko lek do noina pabi da bani fajana dum pau ko fajana pau lo yaw jane me two bodies of mass m and 9m are placed at a distance r at a distance r. The gravitational potential put हुआ है बा on the line joining the body any दुगी join तौनबम where the net gravitational field को gravitational force है where the gravitational force becomes a where the gravitational force is zero where net gravitational force becomes zero will be kaya oigedagi haba net force zero tabham jaga duda potential kaya oigedagi haini maiji minus 16 times gm divided by r be the minus 20 gm divided by r where symbols have the usual meaning yarava good symbol gida matha sar hoizi. So minus 8 gm divided by r. Option number D, minus 12 gm divided by r. क्या ताने हरो? सीधी फॉर्मूला पान में है ना कॉमन ही फॉर्मूला पान चला जी कहीं हरो पोटेंशियल एट सच पॉइंट क्या था यहाँ ये बम माइनस gm by मको ये सेपरेशन r रूट ओवर m1 प्लस रूट ओवर m2 का होल स्क्वायर है ये मतलब सिंजल जी माइनस g माइनस जी बाय एम खतने अने सिदा ngасai आदा एम यहन रे यहन देखो से यहन दे गुड गुड सिदा याव देखो याव दे g बाय r दो थमो रूट ओवर m1 दो m नी अमदुना 9m नी सिगे होल स्क्वायर माइनस g बाय r है यहन सिदा रूट m पुलो कम लौथो बयाने रूट m पुलो कम लौथो गिताडी स्क्वायर दे कम लौथो रादी स्क्वायर इन लो अद कम लौ रादी सिदा 1 ले हो रे सिदा कना ले होनी रूट 9 is 3 सिगे स्क्वायर so minus g root m squared m tare divided by r 1 plus 3 4 squared again 16 so it is minus 16 gm by r yarabo yaradrom yaradram yan tari bhai me am jingse to yengrabo live ta yengzalo am te yenge kwa okay am bo yengam dre okay are mai recording yengjani
Okay, Lakshit Yadav, good evening. Dagi Omkar, hi. Okay, question what is it? Question what is? Let's solve some more questions. Let's solve some more questions. Okay, now next question. Next question. Question. Booklet ki page number 204 duni. I'm going to write the question, so don't worry about it. Page number 204. Mana hire sida. Just nangi mathematical calculation khara sina dore. A satellite is revolving round the earth in an orbit of in an orbit of radius r with a time period page number 204 को question number 12 time period t if the satellite is revolving round the earth in an orbit of radius r plus delta r, where delta r is much less than r, with time period t plus delta t, then find the relation between delta t and delta r. Option number A, delta t by t will be equals to 3 by 2 delta r by r. Option number B, the delta t by t equals to 2 by 3 delta r by r. Option number C, delta t by t equals to delta r by r. Option number D, delta t by t equals to minus delta r by r. yung sig relation je akoina kari haire satellite is revolving around the earth yaraba nangi satellite revolving around the earth in a circular radius, then we can apply Kepler's third law. By Kepler's third law na koi kari hai Kepler's third law na the time period hairabani na time period square is directly proportional to r cube और t directly proportional to r3 by 2 है यार बस यार है और अखोई ना सीधा equals to हाफ पे हर का some constant ऐश मा हाफ पे यार है good. Now this सीधा अखोई ना अमग हायरम गे if we write the proportionality sign is equals to e tar gadi सीधा constant nama half तो नत्रा there must be a constant here when we write equals to when we remove the proportionality sign, then what should be this value of c, where haraga this c is nothing but 4 pi square divided by gm. You must remember this. C equals to 4 pi square divided by g times m, where m is the mass of earth. This is for earth, not for the satellite. Now let's forget about these values. Just c haro, c is sufficient. But this c and this c are not same ko man this is square root la kramni, so now let us call this c1 to not confuse this. अब देखो ना सिर्फ डेल्टा टी पुतो के हरडी अखोना इरर की के नहीं नबा कांदा चैप्टर नंबर 1 यूनिट मेजरमेंट दगा सिना गिव दो so delta t by t change in t with respect to t will be equals to constant do देखो change सही होंगे constant will not change so remove it, so it will be कहता दो बारो नहीं सी पावर टू पुदर है अगर 3 by 2 delta r by r delta do मान से delta चौबीन यूरे delta t by t should be equals to 3 by 2 delta r by r यानी अब से or we can solve this using करी binomial expansion. So binomial expansion सी नरको खोलो यानी but let us not solve using it, just सीखदं खांगो से just remember this यार अब 3 by 2 delta r by r, so option number A, simple. ಯಾರಾದ್ರು ಯಾರಾದ್ರು
Next question number, page number 203. Page number 203. Question number 4. Sida kaya hai ba? A comet moves. A comet moves in an elliptical orbit. In an elliptical orbit. In an elliptical orbit with an eccentricity of with an eccentricity of E equals to 0.20 around a star around a star. The distance between the perihelion between the perihelion and the aphelion is 1 into 10 to the power 8 kilometer. If the speed of the comet at the perihelion is IT1 kilometer per second. It is IT1 kilometer per second. Then the speed of the comet at the aphelion is. Here I am going to use one relation. Just by this relation, I'm not going to derive this. This is the maths concept. So eccentricity, you must know eccentricity ko. But just I'm going to write the relation. Such type of question hai exam use the relation which I'm going to give now. Now yung satellite comet one comet is orbiting around the earth around the sun. This is the nearest point. Nearest point to perihelion. Let us call this point 1. Speed v1 farthest point aphelion speed v2. If the distance between the sun and the nearest point is r1, this is r2. What is the relation? v1 r1 equals to v2 r2 from Kepler's second law, conservation of angular momentum. But here r1 r2 are not given eccentricity then in terms of eccentricity there's a v1 by v2 perihelion speed divided by aphelion speed is equals to 1 plus e divided by 1 minus e. Remember this. Use this and solve the question. How the hierarchy? 1 plus e is 0.2. 1 minus 0.2. क्या तारे देते हैं? 1.2 divided by 0.8. So it will be 3 by 2. Now, velocity perihelion period v1 is given. They are asking to find v2. So v2 will be equals to 2 by 3 times v1. About 2 by 3 times v1. So 2 by 3 into v1 is IT1 kilometer per second. So 3 next multiply 27. So it is 54 kilometer per second. It is 54 kilometer per second. Yarabo. Yaradro. Now next, page number 205, question number 26. Page number 205, question number 26. Hai basida? The ratio between the value of acceleration due to gravity at a height
1 kilometer above and at a depth of 1 kilometer below the earth's surface is where r is the radius of r. Let's use r as the radius of r minus 2 divided by r minus 1, r by r minus 1. Question number C, r minus 2 divided by r. Option number D, 1. For depth, g at the depth is z1 minus d by r. Here we use no assumption. No assumption. So you can use for any value of d. But for g heights, there's two formula. 1 minus twice height by r. Here use only when height is much less than r. अब g 1 plus h by r का whole square. Your yarva sinanagi height is comparable with r. No assumption. See the ani shubha the second one. There is no assumption in the second one. Now we must decide for height. For depth, no issue. Direct you can use this formula. What about this height? Height 1 kilometer have any? Now you must decide whether this height, which is 1 kilometer, is this much less than r or comparable to r. Now you decide. क्या हो जाए सर? क्या हो हारो? Its height much less than r or comparable with r. r hai baze 6400 kilometer ne. Compared to this 1 kilometer height is much less than r. Good. So we will use the assumption. Assumption one approximation value though. So g at a height. Let's find first g at a height equals to g1 minus 2 h by r. Heights eva kanda let's write like this 1 minus 2 divided by r. All measurements are in, say r must be in kilometer. R should be in kilometer because heights to in a kilometer. As I am using height in kilometer, r must be in kilometer. Don't forget this. And g at the depth g has 1 minus d by r. So d is 1 kilometer lower 1 minus 1 by r. So don't forget that r is in kilometer. Otherwise units per annum. Then anidu ratio g at a height divided by g at a depth. The g 1 minus 2 by r amaga g 1 minus 1 by r amaga g का करें अरे मतलब r minus 2 ले हो रहा नहीं मखा r minus 1 ले so r minus 2 divided by r minus 1. This is the answer. For formulas for g heights, you must first decide whether the given height is much less than r or comparable to r. Once you decided, use proper formula, then you will get the answer. Otherwise, lana ta doga. यार ये बस बाउदा से क्वेश्चन करो को चीज है दुगा कोई लेसन जी उन तरह तो लोइए नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 206 question number 32 the radius of a planet is n times the radius of the earth. r to radius of planet is r n times the radius of the earth. So the radius of earth radius of a planet radius of a planet is n times the radius of earth r. A satellite revolves around it in a circle of radius 4 times nr with angular velocity omega. The acceleration due to gravity
on planet's surface is. प्लानेट टू की सरफेस है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या था? ऑप्शन नंबर ए आर ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 16 आर ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 32 एन आर ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी 64 एन आर ओमेगा स्क्वायर. मैं है कहूँ planet to the radius period, the radius of the earth, the satellite revolves around it in a circle of radius 4 n r. 4 times nangi n r da. Here was satellite to gi, here was planet to gi. My angular velocity period, the acceleration due to gravity on the planet's surface, planet to the surface. The planet तुम ले रहे हैं, my radius क्या था बा? n times r, I mean n r है. This is the new radius. अतो how जना की orbit हम ले रहे हैं. Around in a circle of radius so r macha do your small r is 4 times n r man do my orbital velocity mani, but they are given this in terms of omega. So v will be circular motion ki v equals to r omega na throw, so r is n r and times omega. V naught is this much. V naught at v naught for any satellite v naught se mane root over gm by r mane, where r is the actual distance from the center. So they are asking to find the acceleration due to gravity on the surface. Any surface g की values root gm by r square, gm by r radius square. So C is planet for this planet, g on the surface will be gm of the mass of the planet divided by mass of the planet divided by क्या r. r dias r dias की square. So gm divided by r dias square है the nr का whole square, nr का whole square. This must be the gs. So let's try to convert this. Let's try to express gm by r in terms of this so that we will get this gs, because we want to find this gs. Now the root over है एक ताना बता रहे हैं gm divided by, just put the missing data, missing की quantity हाफ से लो, हाफ से तारे मथे लोग थोक का होगा nr का whole square. So divided by हाँ r डू में ले जाए. Now the root over है सीधे और gm by nr square सीधे मांगी gs उतारे which we want. तो आता ही देखेंगे नो n square r square divided by r. What is this value of r? 4 n r. This is orbital velocity. By question, this orbital velocity is given as n times r omega. Now the squaring does law, squaring to the g as which needs to be find r n square r square, the 4 n r equals to n square r square omega square. कब को खुद भी तोड़ो r square n square का करें, the gs क्या था मेरो 4 times n तो 4 n r को 4 times n r omega square. Option क्या why we are not finding the option? Why are we missing the option? हम तो ये अंग्रेजी कायदे सोच भी आओगे. ऑर्बिटल वेलोसिटी की फॉर्मूला रूट ओवर gm by r ले रहे हैं यार होगा. The surface to the मागी planet to the surface to the g की वैल्यू gm by r square डाल दो नहीं, r means n r नहीं हाई रेमाना, तो n r square. Okay. I'm sorry. Yo. B orbital eva kanda r omega eva kanda. What is the r? R omega this is. It should be r omega. R omega high target 4 n r omega oidoni. So B naught should be 4 n r omega. I think size the squaring to ropa kanda. You will get 16 times n square r square omega square. Kakro. Of the n square r square ka 30 is 16 le ho. It should be 16. Yeah, Rabu. 16 n r omega square. At the n among mark is doing. N among our reason doing. I come to the Yang. R have a kanda. My option the 16 n r omega square. The answer is this. If you see any numerical step the square will process and concept is same. Good day's answer. Next question number 34.
Next, question number 34. Question number 34, page number 206, question number 34. The acceleration due to gravity, the acceleration due to gravity on the planet A, is 9 times the acceleration due to gravity on planet B. A man jumps हनकी को लाकदो मंदी की टेस्ट की क्वेश्चन अयाम ngasi की नैनरी बसिदगी लोय हांकनी को सिगी थीम द हांकनी a man jumps to a height of 2 meter on the surface a man jumps to a height of 2 meter. What is the height of jump by the same person on the planet B? Planet B हाइबदुदनगी jump तौबा कांदा माई height कयाम वांगना पाइबा यारमगदगे height कया बोक चलमगदगे 2 by 3 m, B 2 by 9 m, option number C 18 meter, m ना देखो मीटर नहीं 6 meter. So acceleration due to gravity on a planet A is 9 times the acceleration due to gravity on a planet B. Suppose any surface amadagi when you jump up, say initial velocity u amada chongkhatpa kanda, what will be the height? Maximum height क्या माने u square by twice जी माने. Let us assume that नंगे same person in a you are jumping at the same initial velocity in both the planets. अब देखो सागी heights a हाइबा कांदा क्या माने u will be same. Let us assume को कहीं 15 माने लोरो सीधा g a तारनी. So सीधा नंगे heights b will be u square divided by twice g b. Now let's compare the height. Heights b divided by heights a है उसे क्या माना रहे नंगी u square divided by twice gb divided by u square divided by 2ga. u square का करो 2 दो को तो क्या तारा है g of a divided by g of b. मान करी हारे बा acceleration due to gravity on a planet by question g on the planet a is equals to 9 times g on the planet b. अब इन पानी पर ga by gb दो क्या तारा है it is 9, so it is 9. So height on the planet B will be 9 times height on the planet A. So 9 into height A can P mana 2 meter. So the answer is 18 meter. The answer is 18 meter. Yarava, very simple. Yaribu. Yaribu. Next page number 208. Page 208 question number 55. मां क्या है वह orbital velocity. The orbital velocity of a satellite in a circular orbit just above the earth surface, just above the earth's surface is earth surface हाई दो निको सर ये क्वेश्चन है सेंटर है में above the center surface हाई दो earth surface हाई दोगा earth surface is b naught for a satellite orbiting at an altitude of half of the earth's radius. So altitude had a height to ni height is r by 2. सीधा करी हारीवा the orbital velocity will be क्या ताकत की है orbital velocity will be option number A. कहीं ना हेंग तौखली से ना हेंग तौरी से कह दो भाई नो ऐसे close हम तो तौगे को let me close this.
ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯝꯇꯪꯒ ꯊꯥꯒꯦ ꯍꯦꯡ ꯇꯧꯈꯠꯂꯦ ꯍꯦꯡ ꯇꯧꯈꯠꯂꯦ ꯀꯗꯥꯏ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯗꯥꯏ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ let me close this let me close this and then reopen okay यार okay now the orbital velocity of a satellite in a circular orbit just above the Earth's surface is b naught. For a satellite orbiting at an altitude of half of the Earth's radius, for a satellite orbiting at an altitude of half of the Earth's radius, find the orbital velocity. Find the orbital velocity. Yung icham chamba question is just magi ne. Iba kui do the answer tahanna basin with the kitang lubu manbi wani. Find orbital velocity at this hat. Option number A, root over 2 by 3 times b naught. Option number B, 2 by 3 times b naught. Option number C, 3 by 2 b naught. Option number D, root over 3 by 2 times b naught. Yung orbital velocity, ako na khangye near Earth surface ta. Near Earth surface ta orbital velocity is kaya root over gm by r. Hi gidai ne gm by r near Earth surface, which is given as v naught. Adi next kare for a satellite orbiting at an altitude of half the radius. Now for second satellite to for second satellite to magi height si kyanin piba height is given as r by 2. That means small r will be r plus h, which is r plus r by 2, which is 3r by 2. So therefore orbital velocity of the second satellite will be root over gm divided by small r. Gm divided small r have the 3r by 2, which is root over 2 by 3 times gm by r. Root over gm by r sidhi kehno v noni, so root over 2 by 3 times v naught. So this is answer. Very simple, very simple. Very simple. Booklet sidagi koi question ani dang hoti gen. Let me solve two more questions from our new booklet. Adagi the old booklet te question khar gam hoti gen. Let me solve some more questions from the old booklet. Okay, two more questions from our new booklet. Question phajab jab khara wachi. Ngasi je waragadi ai thermal gi physics so. Tete dangsa. Which option, which question you are talking about? Should it not be option D? Which question you are talking about? I am not sure. I don't know which question you are talking about. Karamba question no? Which question you are talking about? Let me know. Tete. Karamba question no? Okay. See, Kanoji or Maniko. I think she is talking about. You are talking about this question number 32. Yeah, see what I'm So 4 into 16, it should be 64. Good. It should be 64. The option number D. The option number D. Yes. Option number D. Option number D. Good. Thank you for the correction. Good. Chume. Thank you for correcting me. यार calculation ले कितना सही रहे. Good. यार. Okay, now page number page number 208, question number 56 to question number 56. कई है माने सीधा. A satellite of mass m revolves around the earth of radius r at a height x from its surface magi surface to the x height mazi revolve tole re. If g is the acceleration due to gravity,
If g is the acceleration due to gravity on the surface of art, on surface of art है ना ये g do acceleration due to gravity is g. अब the orbital velocity, ये question is very simple, just ना answer to the mana palm mong se tahana bo hana. We should try to get the answer in the way they want. That's it. Concept is very simple. G is the acceleration due to gravity on surface of art. The orbital velocity of the satellite is option number A, z r square divided by r plus x. B, z r divided by r minus x. Option number C, zx. Option number D, z r square divided by r plus x का square root, half power. माना करी हारे, a satellite of mass m revolves around the arc of radius r at a height of x. Center से ले रहे, radius is r, ना कि height तो ना क्या है बा, height is x. So satellite is orbiting here. Satellite. Good. At a velocity of, so v naught, let v naught be the orbital velocity. If g is the acceleration due to gravity on the surface of art, orbital velocity put हुआ है. We know that orbital velocity is nothing but gm divided by small r, root over gm divided by r plus x. Now I want to express this in terms of small z. Small z सीधे क्या माना है? gm by r square नेम है. So let's express this in terms of this. The root over gm divided by r square direct थमो. मखा r square थमदी मथक r square लौथोक कावनु divided by r plus x. अब क्या तारे सीधी? It is equals to, it is z r square divided by r plus x. यार वाह, g r square divided by r plus x का square root. That's it. Very simple. Very simple. Very simple. यार अदरो, यार अदरो से कोई last two दिहाई गरे अदुबो question अनी तंगब को होचे को से last two होगी जी हनक last two अदुम हाई जी. Page number 208, question of 57. Normal द देखो सी याम होलम दे क्लास का देखो याम काइन होते मैम दिसुम बक्सिंग जे कोई दन को साथ रखड़ इशू खड़ थेंग लगनी. So extra होइना. Extra does not mean that you should skip such questions. खंजल लो जी, खंजल लो. Say last two question from our old booklet. New booklet question ama nigo hot kiniko. We will solve some more questions from the new booklet. So potha yengzi. Two satellites of masses m and 2m are revolving around a planet. Are revolving around a planet of mass m with different speeds in orbits of radii r and 2r respectively. The ratio of minimum and maximum force on the planets को due to satellites is diagram ये लागे. I am going to draw the diagram. Suppose इन्हें कि planet तुम ले रहे हैं. Now अहान बो orbit सीधा next mass अमखल ले रहे m को वो mass अमखल. My radius is r. Then अतोप orbit अमदमु अतोप planet अम यारवा whose radius is twice r, mass is twice m. They are orbiting at a different speeds. Different speed ungamina, they may be at the any positions at the given time. The different position, the location, the level. The ratio of the minimum and maximum force option hanapi half, B the 1/4, C the 1/3, D the none of the above. When will we get the maximum force? When will we get the maximum force? Hang tàu
let me again close this cause close of the arrow. Hang tàu cô có. Yeah. Good diagram nông एक तैयार है. So let me first give the option P लगे half. B the 1 by 4, C the 1 by 3, D the none of the. Now diagram से given नहीं mass इधर ले रहे हैं, satellites इधर ले रहे हैं, around these two orbits in a circular orbit. अब मैं सिर्फ की radius r दा मागे mass m small m, this is capital M. अब मैंने twice r मागे mass ना twice m. अरे कोई कमाई होला नहीं. Now let's solve this. When will we get the maximum force? करूँ कहाँ ना कोई maximum force पंग दो. We will get the maximum force when they are on the same line, on the same side. करूँ कहाँ the maximum force when they are at the and in the same line, and along on the same side. Same side labor kanda, same side smile later gadi. Nagi first will attract in this direction, and the second will also attract in the same direction. Yeah, good. The net force will be maximum here. So this is the maximum force. So maximum force will be G times, let us call this 1, let us call this 2. G times small m. I think mabani force anidu m divided by mabani arapati r na through r square plus G times m capital M divided by capital M sinate twice m capital M divided by twice r ka whole square. So this is the maximum force. When will we get the minimum force? Minimum force na kam kan phang ba when they are in the opposite sides. Yara ba exactly opposite oina kanda siranagi r2 le re yara ba amaduna side thamo twice m amaduna side le ro mass m. When they are on the opposite side am macha sina kai donai honarni mass attract tongai honare. 1 hero sina 2 hero. Let us call this f1. Minus attract tongai honarni. Let us call this f2. So f minimum will be in this case. The force will be kya hoido ba f1 minus f2. f1 di kano g times m macha small m divided by r square minus gm twice m divided by 2r ka whole square. Now see maximum force kya ताने hero. Common ओइबसिंग लग तो करो g m divided by r square क्या ले हुई 1 plus 4 divide 2 by 40 can 1 by 2 which is 3 by 2 which is 3 by 2 which is 3 by 2. So it will be 3 by 2 times g m divided by r square. सीधी क्या था बा g m divided by r square लग रहा है 1 minus 1 by 2 which is half. So 1 by 2 times gmm divided by r square. So therefore, f maximum divided by f minimum will be pulo kaksa naraga 3 by 2 divided by 1 by 2. Maj kai hangino minimum by maximum, minimum by maximum. So f minimum divided by maximum will be 1 by 2 divided by 3 by 2, which is 1 by 3, which is 1 by 3. Yeah, Rava? Yeah, Rebo? Last question from the booklet. Last question from the booklet. Booklet to the last question. Booklet की last question. Booklet की last question. Same page. Question number 60. Page 208. Question number 60. Page 208. Question number 60. Question ना क्या है बा? The art is assumed. The art is assumed to be a sphere of radius r. A platform is arranged. A platform is arranged at a height r from the surface of r. From the surface of r. R के surface की नहीं r लापा जगह था. थमे the escape velocity of a body
from this platform, from this platform, from this platform is F times V, where V is the escape velocity from surface of Earth. From surface of Earth. The value of F is F की वैल्यू तो क्या आता है? Option number A, 1/3. Last question from the booklet. Then we will jump to the all booklet. 1/√2. We will solve some more questions. यार अब finish. Arrow क्या ताने से? अखोइन हाइग्रे as we said को as we go higher ना कि higher में दसल लिंक है escape velocity will reduces because the energy required to कोई कहता रहे shift this to infinity becomes lesser. Quite some example of simplest you can remember like this. You can think this way. You know सीधा कि infinity, let us suppose infinity is here. सीधा कि था तो इन्हें उसे. But if you go higher, if you want to ना कि कहता रहे shift this to infinity, अरे माजे infinity the नक्शा लग रहा it becomes closer to the infinity. So definitely energy required will be lesser. So escape velocity will be lesser ने. Good, lesser होइदा उन्हें. अब दी ये जी. अब lesser होइदा वर्गा दी. This is not possible. √2 will not be possible because √2f पर √2 times v is greater than v never. So option number C is not possible. अरे नया option नहीं है जी. अब मैंने हाई ग्राफ ने करी हाई. Inside the class we have discussed that escape velocity देना ये object अमा खग launch तौगे हरडी total energy of the object must be क्या होइदा बा 0. To launch an object say a body है जी at VE that is escape velocity the launch तौगे हरडी total energy of the body must be क्या होइदा बा total energy of the body must be क्या होइदा बा 0. So at this height, it is going to launch from here. The escape velocity is now v will be मानो क्या नहीं है बस से symbol से let us slightly change some symbol को सी v is v e है यो escape नहीं है तो clear लिखा ना अब सीधे लगे तो मागी escape velocity तो क्या नहीं है बा f time of ve where ve is the escape velocity from the earth's surface. Now let us call this point as 1. So to launch a body at ve, total energy of the body must be 0 at that location. That is total energy at 1 must be 0. 1 the total energy U1 plus K1 equals to 0 होइदा उन्हें. U1 the potential energy minus Gm divided by माग इसी height 2. Let us call this height से क्या नहीं है माना. What is this height? Height is r. Height is r. Radius is r. Then small r will be r plus height which is twice r. So सीधे सीन तो small r नहीं. Kinetic will be half m v square, that is f times ve का whole square. It must be 0. अब m कथन लग रहे हैं gm divided by r, it should be twice r plus half f square v square equals 0. 2 दो जो का करो. We know that अपन रखेंगे on earth surface v escape से करके माना हुआ root over twice gm divided by r. Now the implies ngasai ju mamang ju holam mani ve square equals to twice gm by r ni the gm by r ji करेगा मान रहे हैं v square by 2. So substitute here gm by r के मोता v square by 2 plus f square v square equals to 0. अब जैसे देखिए v square का करे थंग दो थंग जिन साना रो f square equals to 1 by 2. So f will be 1 by √2. F will be 1 by √2. यार इधर यार इधर यार इधर So all booklet है क्वेश्चन करो वाला जी. Let's solve some question from the all booklet. इसके velocity फाइ दे दूं हो रखसी. तो फजब जो क्वेश्चन को खंग पति सर ने मैम खन कर ले. I think it will not be possible to solve all. तो खरा important होगा कोई syllabus जो याव वही तारे.
questions which are in our syllabus adu holas. Next question. Simple question de hausi. Let's start from the simple question. All booklet kiniko se na? All booklet. All booklet. Question. The ratio of radius of two satellites is p, and the ratio of their acceleration due to gravity is q. The ratio of their escape velocity will be satellite anigi. The ratio of radii of two satellite is p, and the ratio of their acceleration due to gravity is z. Q haba. The ratio of their escape velocities will be. Of the planet, my is a planet any oider again, escape velocity any ratio I know happening. I don't think I could consider. Man, the ratio of the escape velocity is option number A, q by p ka half, B the p by q gi half, C the pq, D the root over pq. The khanje ko the ratio of radii of two satellite है जके तो नो two planet oyam do male. I think the question should be the ratio of radius of two planets. Two planets ki oido male. So let us send this satellite to planets. I think this would be the correct question. The ratio of the radii of two planets. Okay. I think this is the correct. Sida hoche. Shem do ko planets. Now. Hello. किधर है? हाँ, क्या बात सुनी है? साथ हो, मैं साथ हूँ. हम्म. Now next, we know escape velocity. We will assume that it is going to be launched from the surface. So escape velocity for a planet on the surface is given as root over gm divided by kari r. Twice gm by r. Since they are given in terms of acceleration due to gravity, so let's write this in terms of g macha, small g. So escape velocity on the surface of any planet is root over 2gr. So let's compare this to Be1 by Be2 haradi. Be1 by Be2 haradi. Root over twice z of the one radius of the first planet divided by twice z of the second planet radius of the second planet. Two do ka karo. मान कर ratio of the radii. Radius में कितना की ratio मखई क्या नो? There is r1 by r2 is p. So r1 by r2 you can write p. Radius ratio of their acceleration due to gravity, that is g1 by g2 is q. So the answer is root over pq. क्या रहा? See satellite to satellite और हमारा planet वही तो नहीं planet. क्या रहा? क्या रहा? Next question. Escape velocity of a 1 kg body on a planet is 100 meter per second. Potential energy of a body at that planet is. High planet to the magi kay potential energy option number A minus 5,000 joule. Option number B minus 10,000 joule. Option number C minus 2,400 joule. Option number D minus 1,000 joule. मान करिए हमारे escape velocity of a 1 kg body on a planet is 100 meter per second. Potential energy of the body at the planet is. We know potential energy is minus gmm divided by r.
Now let's express this in terms of scale velocity. As we saw earlier, ko mamang so koi nahi nagre gm by r have kai ka manaba scale velocity square by 2. So let's put it here, v square by 2 यार बस दूंगा सीधे m b square क्या नो b square क्या नो b e square b scale velocity is 100 meter, so 100 square divided by 2 into mass is 1, so it is 10,000 divided by 2, which is 5,000, which is 5,000 joule. Yeah, which is 5,000 joule. So the answer is 5,000 joule. Next question. Potential energy of a 3 kg body at the surface of a planet is minus 54 joule. Then, escape velocity escape velocity will be. Escape velocity will be. Option number A, question is basic question. Basic concept based over. Simple question based on the basic concepts. 162 meter per second. Option number C, 36 meter per second. Option number D, 6 meter per second. Now tell me, potential energy of a 3 kg body at the surface of planet is this, then escape velocity will be. As we said earlier, for a body to be shot at a escape velocity, for a body to be launched at escape velocity at a VE, total energy must be zero. A total energy have a potential plus kinetic to pull a zero tado natro. So kinetic should be equal to minus potential energy. So potential is minus 54. So the kinetic should be plus 54. Kinetic means half mve square minus half mv square. So then ve square will be 54 into 2 divided by mass. क्या था इधर यारो 108 तारवा divided by mass से क्या नो 3, mass है 3 3 ने divide तोड़ी 3 6. So v इसके will be क्या होगा 6 meter per second, 6 meter per second. So total energy of the satellite should be 0. 0 does not mean small value in gravitation. Hire में को 0 means high value in 0 means maximum energy, maximum value. यार अदरो next question. The ratio of escape velocity at art VE, it is VE, to escape velocity at a planet VP, at a planet VP, whose radius and mean velocities, mean densities, whose radius and mean densities, whose whose mean radius whose densities and mean radius, whose densities and mean radius are twice as that of art is. Option number A 1:2 root 2. Option number B 1:4. Option number C 1:2 root 2. Option number D 1:2. Now let's solve this. माना करे escape velocity की ratio पुथो है बनी, तो escape velocity on the earth surface any नगी surface में escape velocity करके माना बा escape velocity is nothing but root over माना करके no p है densities then radius, that is gm by rc energy. But we want to express in terms of densities because they are giving the relation in terms of density. Density had a mass to क्या मान रहे हैं, mass is volume into density 4/3 pi r cube into density r में का करो, so it is 4/3 pi g r square लानी, so rho. So therefore v ratio of the v will be, since 4/3 pi g they are all constant, कथन नगरे हरगा r on the planet art divided by r on the another planet whole square, density of the art divided by density of the planet सीता आठ होगा.
नाउ मखी रेशियो सिंग कहीं हाई आर्ट का अथवा प्लानिट का गी नंगी डेंसिटी एंड रेडियस मखी की रेशियो सिंग डबल डबल नहीं हारे अब 2 स्क्वायर 2 तारानी सो 2 स्क्वायर क्या तारे 4 में 5 के तारे 2√2 तारनी सो इट इज 2√2:1 कहीं से कौन रीजन है why the ratio of scale velocity at earth to scale velocity at a planet whose radius and mean densities are twice as it over good sorry by question na ये density radius of the planet is twice of radius of the earth density of the planet is twice of density of the earth अब सीधे सिंजलादी क्या तारे root over 1 by 2 लानी का whole square into 1 by 2 so it is nothing but 1 by 2 root 2 1 by 2 root 2 1 is to 2 root 2 यार 1 by 2 root 2 एनर्जी रोम द बेस तब क्वेश्चन अमनी होटकीगे अदुगा कोई लोशन मोमेंटम के फजब क्वेश्चन अमगा वालेको वी विल सॉल्व इट सो एनर्जी द बेस तब क्वेश्चन अमतगा नेक्स्ट क्वेश्चन a person brings a mass of 1 kg from infinity to a point A. Initially, the mass was at rest, but it moves at a speed. It moves at a speed of 2 meter per second as it reaches A. As it reaches A, the potential at A is ए द पोटेंशियल क्या होएगा देखिए हवा मास इन्फिनिटी दे पूरी नहीं ऑप्शन नंबर ए -3 जूल पर केजी जूल नहीं -3 जूल खतंग यू कह दो मैं पर केजी हाफ केजी -12 जूल either none of the above now let's see infinity दगी मास अमखक 1 केजी लुम्ब मास अमखक पूरे कदाइदा let us suppose a है जगह से work done in bringing from infinity to this point A will be total energy at A minus total energy at infinity नहीं since at infinity potential is 0 and also kinetic 0 नहीं how I so ya papa siempre lo lagi ko karena no lau je lau so initially rational error में potential जो 0 नहीं infinity the so it is 0 अब जी नगी हाई रिवर जगह तो दिमाग potential ले रहा plus my kinetic ले रहा अब work तो दिमाग ना क्या नहीं है initially कौन नगी a person brings a mass from infinity to point A here the work done but it moves I see the question incomplete or the question is incomplete complete तो hello माना करी हाई रिवर the work done by the person on the mass is -3 joule haiba. So find the potential at A. A the potential put हुआ है बनी. So the work done is given as -3. Of the kinetic to the -3 hydro potential we are going to find out. Kinetic is half mv square. So -3 equals to UA plus half m is 1 v is 2. But the 2 तार है 2 दो समझा कितना करती है -3 - 2 that is -5 joule. So the answer is -5 joule. Basic definition the base होने को क्या basic definition basic definition है क्वेश्चन मांगा तरु को ठीक है
noi waragadi potha yenguko break lowraga aidi break low taade noi matam yam sangdokrani. So let's solve straight. Next mana haire infinite number of bodies each of mass 2 kg are situated on x-axis at distance 1 meter, 2 meter, 4 meter, I meter, and so on from origin. Good. The resulting gravitational potential due to the system at the origin will be origin and potential net potential kya ताकत have option number A minus z, option number B minus I by 3g, option number C minus 4 by 3z, option number D minus 4z. Now let's solve this. Question says that x-axis में chingo, this is your origin, x equals to 1 meter ला पर जगह था, this is your x-axis, 1 meter ला पर जगह था, x equals to 1 से था, नंगे mass में क्या नो 2 kg, each of mass 2 kg नहीं, so let us call 2 kg हरो मागे massing जी, अदो next ना नंगे 2 meter डा मागे mass में जो हाँ पे 2 kg, then मथंग दना काय दा 4 meter डा, सिर्फ नंगे 2 kg थमे, मथंग दा 8 meter डा 2 kg, and so on सुन सके दो रे. मानो पुदुवाइसन नेट पोटेंशियल भी नेट एथ ओ ने. Let us call this 1, let us call this 2, 3, 4 massing dubu buko. Let us call this first mass, second mass, third mass, and so on. Since fourth mass or my sacro. But since potential is a scalar quantity, net potential height is just scalar sum. So B and O due to the first mass, B due to second, third, fourth. Small jagiro potential की फॉर्मूला थी माइनस जी मास 2 डिवाइडेड बाय मागे r2 r1 प्लस ऑफ माइनस जी एम डिवाइडेड बाय r2 मास से जमा ना दो रही है जी एम बाय r3 प्लस नहीं समाई जा किधर है अब देखिए कहीं भी आ रहे हैं से हम तंगे इरम की है माइनस जी एम डिवाइडेड बाय r4 जी एम आर ऑल कॉमन माइनस जी एम कॉमन लो तो करो मास कौन वैल्यू से लक्ष्य मास इज नथिंग बट 2 की जी 1 by r1, what is the r1? r1 is 1 plus r2 the kya no 2 meter, so 1 by 2 plus mathang is the 1 by 4 plus 1 by 8 plus 1 by 16. So chalo mathang infinity wo सीधे कई तारे से था. It is nothing but infinite gp ने वो 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 का whole square. Series में उबंग अम्बरो, so it is nothing but infinite gp. 1 by 2 का whole cube, 1 by 2 का whole 4. Remember one formula for infinite series. A plus AR yaraba plus AR to the power n R square. A हर का समाहर ने इसमें से ले से R square plus नंगे AR cube plus माइनस में जखरा that is this is your infinite GP नहीं infinite GP geometric progression अदो and common ratio से क्या नो common ratio is R. Common ratio हर कदे second divided by first term, third divided by second term. नगी अदे right side लेबर term सिंगु left side ना सुम divide तो होता. तारक पदवी नहीं R लोइन तारो इधरों. In this case नगी सी GP नहीं infinite GP नहीं. This is infinite GP. Common ratio R is half. That is नगी second to the third second to the first term divide तोड़ी half by 1 is 1. Next third से दा second तो नहीं divide तोड़ी half तानी सुमाई तो ना सुम right side thanga thanga bani divide to do half tane which is less than 1. So infinite gp for infinite gp of common ratio less than 1 1 the less or then adu tardi
sum of the nangi kano to series to sum of the series is given as a by 1 minus r yaraba a by 1 minus r so this is lazy so it is minus gm so a the kind of first term it is 1 first term is 1 divided by 1 minus common ratio the half the last क्या आता है 1 minus half the half to मतलब जगह 2 तारानी minus 2 times gm gm m तो माने 2 की जी ने हाई so it is minus 4g minus 4g very simple but you must know the नगी formula for the sum of infinite gp यार अब ಯಾಕಂದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರು कोई almost pung ani sasal hai okay यार pung ani di henzale do wai honembo question khare de lairi let me solve this and wara gadi matangi ko nangi evening gi thermal gi class to ma khoi ngasi call up torni aduga hayeng oina dum hayeng atar hansit ai record tawge good conception jam ta hana lotion se fazana gyan ta na apung pan lotion lji gravitation is a simple chapter we should not miss any marks from gravitation yandaraba so isam chambo question makai we have already discussed inside the class extra oina question kharaga nahi na re this is sufficient you do not need, you will not required to nagi kaida solve any other questions just see them holo yarami next question the magnitude of gravitational potential energy of a body at a distance r from the center of the art is u center of art gi magi gravitational potential energy is u ni haba its weight at a distance 2r from the center of art will be good question खुपी जाऊं option number a u by r u by 4r u by 2r and then 4u by r यार वाह मान करी हाई रिवर्स है the magnitude of gravitational potential energy of a body at a distance r from the center of art is u center of art tagi r lapa jaga amakhakta magi potential energy kya ne haba u which is nothing but g m magi mass m art ke mass m achauba divided by r its weight nagi say weight higher zeba weight add kraida nagi add distance of twice r weight add nagi 2r distance center to किसी weight had a mass into g ने g at this height g at height से करेगा माने सिद्धि नगी g हर का 1 plus अदु इरुनु को fundamental basic तो हन इरो gm divided by केनो r square ना थ्रो यार अब वो g have a root over sorry gm divided by r square नहीं here r is nothing but twice r यार अब हमारी रेडियस को क्या होलो है twice r अब क्या का मानो हम थोड़े से so it is nothing but g times m divided by 4r square now let's express this in terms of u see minus sigma for now ignore this minus because we are going to find the magnitude अब इधर देखो हारो g m by r से u हो गया है इन पामी से कहनो सिर्फ माय यूज है let's write this g m by r तो मैं सिर्फ तोंगान थमो अदुगा सोम द कई लेहौरे तो दे 1 by 4r लेहौदो रहे gmm by r से दी magnitude wise it is u नहीं so it is u by 4r यार रवा गुड सो मैंने tricky क्वेश्चन खरा सानर पे आइको they may ask some tricky questions next next
Next, simple question amtang. Loishalakadore. Only a few questions left. A spherical planet has mass mp. Basic nangi definition the base of question am hangya. Diameter dp. A particle of mass m falling freely near the surface of this planet, near the surface of this planet will experience an acceleration of will experience acceleration due to gravity equals to option number A 4 times gmp divided by dp square, option number B g times mp m divided by dp का square, option number C g times mp m divided by dp का whole square, option number D 4 times g m p m divided by dp का whole square. Good, ये ngase dudi mass of the planets m dang har su yar poni yar ba mane se da p hapsan dan e da mo chala le kai so kai देखो ला जी kai har ba mana mass of the planet तुम ले रहे हैं my mass is mp है रे my diameter p है instead of radius they are giving the diameter so we will use the radius, don't worry. Mass m falling freely near the surface of this planet will experience an acceleration. Object amakak magi mass m hairo masi tarpa kanda mana feel tawdu acceleration. See acceleration jibu kari kauge मैं. It is acceleration due to gravity do not wrong. It is nothing but acceleration due to gravity. So they are simply asking to find the acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity is nothing but gm divided by r square. Mass of the planet rp square. Yarava? Good. अभी 36 क्या तारने हारो gmp radius is nothing but diameter का half, so dp divided by 2 का whole square. 2 मतलब चल दी 4 times gmp divided by dp square. like रपोने में very simple. Next at what height numerical value को numerical से the base तो वो at what height from the surface of earth the gravitational potential and the value of g are minus 5.4 into 10 to the power 17 kg joule per kg square and 6 meter per second square respectively. Take radius of earth r as 6400 kilometer. Calculation khak duhan by wani sidi ate kemna te ko se so 1600 kilometer, option number B 1400 kilometer, option number C 200 kilometer, option number D 2600 kilometer. Yung mana p river radius se mana p river sida p do river na ki height se tare height is saure since height is larger akoina se 200 ko basi khakta ko p is atoi lo saudro aduna ko nagi g ki value puthokpa kanda assumption sinarnu amana yengo height from the surface is my potential the per kg square na te ko se per kg ka tang oidoni joule per kg. Okay, anyway yengo se the art se the lai re magi height amakak at a heights kakhat pa jaga da my potential energy se karike potential de kage mane what is the potential minus gm mass of the earth divided by nangi r sidagi pull up to r similar raba good
At this particular height, what will be this g? G is nothing but gm divided by r square. Understand, Darbo? Good. But from this, what we can find out is, numerically, oina magi magnitude wise ta. Size can I write like this? Gm by r is 1 by r, which is nothing but v divided by r, magnitude of v divided by r. So let's substitute the values. G heights command pire mana. G heights command pire. G height is 6 equals to v की magnitude is 5.4 into 10 to the power 7 divided by r. What will be this r? R do one of the e's is r. So r do put okay, the answer will come in terms of meter because SI the whole vanina. The 6 and the come 6 0.8 na throw 6 9 6 9 is 54 ni. अब क्या तारे से 9 into 10 to the power 6 meter. Kilometer on the onto केडी 9,000 किलोमीटर यार वो अजय 10 to the power 6 अभी 10 power 3 m का 10 power 3 m का 3 दुकान 9 के पुल दे 9,000 so 9,000 kilometer. But r is nothing but radius plus height ni, it is 9,000 kilometer because answer to kilometer period. So your heights will be nothing but 9,000 minus r, which is 9,000 minus 6,400. अब क्या आता है 2,600 kilometer. So it is 2,600 kilometer. यार was very simple, very simple. यम लायर में साड़ी हम लूटो मालूम मगर. से क्वेश्चन खर गतंग आइसले, क्वेश्चन खर गतंग आइसले, आतंग खांगजी. क्वेश्चन मंगा मुक्तंग आये, मंगा मुक्तंग. Question: a rocket is launched vertically from the surface of the earth of radius r with an initial speed v if atmospheric resistance is ignored. If the atmospheric resistance is ignored or neglected, the maximum height attained by the rocket is. Rocket to other yorubang number do. Yung si question si am lie have. Hang on tore. Ngai hideda. Koko amu cancel toga ade aroy. Amu cancel tor tha de aroy. Okay. Amu idea the rocket is launched vertically from the surface of the earth of radius r with an initial speed of radius r. With an initial speed of v. With an initial speed of v, which is less than escape velocity. Mark and the iram de those either the arrow cause escape velocity is already escaped over them. Pandeyadava. If air resistance is ignored, if air resistance is neglected, air resistance neglect then maximum height attained by the rocket is. Sig is the energy conservation paladum yani. तब वो पी वो ऑप्शन खुपी सिदा नोइन हयंग की हिद्रा अदु हके वानी r by how good girl nangja good option number b how थबक तो लोइदर plus 1 सीधा h equals to r square divided by 2gr divided by v square minus 1. Option number D, the h equals to r square divided by 2gr divided by v square plus 1. Yengo sida si option ani it is impossible option ni kaido bai no koin habdu sumba tricks me amjing revision the takani not now. Now how is it? Rocket amakak launch tawre velocity amakak da velocity is less than scale velocity oidab shwa aroi.
then nangi heights power yawren khalo maximum height 2. Let us call this level 2, let us call this level 1. Maximum height the velocity will be 0 ni. Sing asi class the volume baduni ko. By energy conservation, because there is no air friction, by energy conservation, total energy at 2 is equal to total energy at 1. Total energy at 2 will be potential plus kinetic. Similarly 1 is potential plus kinetic. 2 की potential क्या आ रहा है? Minus gm, mass of the art, the mass of the body divided by nangi the height 2, which is r plus h. Kinetic energy will be 0 at maximum height, velocity is 0, minus gmm divided by surface की r plus kinetic is half m v square. Now my focus is finding heights. अब देखो s we solved earlier, see m मचा मचा का करो. gm by r हाइबसिटी b स्केप स्क्वायर डिवाइड बाय 2 नी यार होगा b स्केप स्क्वायर डिवाइड बाय 2. अदगी अमन को ओके माइक g कनोगी सरफेस की g द एक्सप्रेस तो है. So let's express in that way. g is nothing but gm by r square. So whatever sida yauri मैम सिंगे सिदा सारा जे अदे gm है जो करके मान रहे थे g times r square. So let's substitute here. Instead of gm, let's write gr square divided by r plus h equals to minus gm की होता gr square divided by r plus half b square. Do not forget that we are going to find करी heights. अदे gr square में कहीं पुले से let's combine this. सीधे r वो का क्या है? From the law, left the law gr कमन लोग थो. The 1 lani 1 minus gr the r by r plus h, it will be half v square. Ko easy kaino. Sorry. My focus is finding heights. So don't combine them. Combine them. Combine to जी के. अभी देखो इस माइन तो जी right side से करो. r plus h से right से करो. r plus h ला लो. पूला मखई मखा द थांगो. मखा द कमाई ना minus gr square divided by minus gr square plus half v square है ना. पूला मखा थांगी नहीं को right side मखई. Now the gr square ना पूला उन तक divide तो divide everything by नंगी से क्या ना gr square ना. ना तो 2 से ना हम तो हाना स्माइट तो 2 ना क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 ना हाना 2 ना क्रॉस मल्टीप्लाई तो ताड़ी क्या ताड़ी मतलब तो 2 का करो gr square minus 2 मफम ऑथों लगे minus ना हाउ बजे नुआइते. अदे मखा तो कमाई रखता रहे v square minus twice gr square माई इतारे equals to r plus heights. So you want to find heights, so r असम थांगरो. So कमाई इरानी twice gr square divided by v square minus twice gr square minus r. Solve तौजी इरुनु सिदगी है ना फजबा ना ये सिंप्लीफिकेशन उरगा दिन में तौबा हैरगा देदुम तौ well and good. Heights equals to twice gr square minus v square r minus minus plus लानी twice gr तो क्यों कोंग लाइजन कहिनो क्या मोशन तारी से के दो नो why ngày hôm qua số tàu của tàu gì answer gì ta ta rồi đâu nó xuống tàu đi sẽ cái đâu nó ta rồi đâu nó xuống tàu đi sẽ cái đâu nó gr square ले रहे हैं r plus height gr square divided by सीधा gr दा ओके gr दा आरम का खरवनी गुड. अगर क्या था so b square r ले रहे हैं तो it should be gr square divided by b square minus 2gr. So cancel किसी cancel हम तरम देनु कहीं ना से मो cancel तरक त्रिजे cancel तरक त्रिजे तुम हिंग ले फर्क तारने में को they must be cancelled यहाँ से कदा वाइड सोई रहे where did I make mistake minus gr square minus gr plus half v square r plus heights. The minus from the on gr square divided by v square good minus twice gr r plus heights r from the line minus r the minus v square r line the minus plus 1 twice gr square
karigino. Where did I make mistake? Where did I make mistake? Last one namtang yengi minus gmm divided by r plus heights जा रहे हैं minus gm by r plus half v square m का करें g r square gm is nothing but g r square अब चले r plus heights g r square divided by r r r का करें सी सोम जा करें मखा दो ना ओके मथा मखा ऑन तो ना करें मथा मखा ऑन तो ना करें प्लस हाफ v square और दे देना ये टू सोम जा करें just mind of the term is let me simplify in another way. I don't know where did I get mistake. Where did I make my mistake? I cannot see it. Ado ita देखो के दोता रहे हैं. Let's divide whole by gr square. Pull up the gr square नम्बर divide तो करो. gr square ने divide तोड़ी क्या ताने हरो सीधा. माइनस हुआ हमने divide तोरो सी 1 था मोरो. सीधे क्या ताने 1 by r तारनी सीधा plus b square by twice सी minus लानी minus twice gr square equals to r plus heights. कई कानर ये तो दे. H will be equals to 1 minus r b square by twice g r square minus r. अब दिस divide हो रहा दी मखा द 1 by r minus v square by 2 g r square 1 minus 1 तारनी plus नहीं r कथन v square by twice g r लाख तो रहे 1 1 का करे तो नहीं मथा तम हम खतंग लाख तो नहीं होगा साइड तम नहीं कमाई ला मिनो फरे सिर्फ तम हम खतंग लाए so it will be v square by 2g r divided by LCM तो लोग जिसे LCM लोग ताड़ी क्या तानी सिर्फ 2g r लानी minus v square लानी तो को मखा दा 2g r square अब देखो इधर है सिर्फ नंगी 2g सिकी 2g जगह को r को r मथे तो लानी so it is v square r divided by 2gr minus v square. So now let's divide both numerator and denominator by v square. R by 2g r by v square minus 1. Calculation में कितना बचा ले? So r by 2g r by v square minus 1. Option number A. Calculation में कितना सोए तो रहेगा क्या? Process are नहीं simple, concept is simple but simplification तो कितना लुहा ले मानो? यार है? क्या हाल है जी? यार अदरो नेक्स्ट क्वेश्चन a spherical planet can you name सिर्फ what करें at what height the acceleration due to gravity is reduces by 75% of its value on earth surface. अर्थ की सरफेस लेहोबा वैल्यू दुगी नंगी ngasai 75% reduce tawghigada height do kaya dun habo. Option number A r da we have to find height score 3r d dana 4r. Let's find out. Man haise keno g at the height by question g at the height is hana lairamba du dagi 75% reduce awre, that is 3/4 reduce awre. Reduces to and reduces by. You should know the difference. Otherwise, you will get the wrong answer. So the g height is nothing but g by 4 height. New g will be at this height will be g by 4, 1/4 of the g, because 75% has reduced. Now since height is given in terms of r, आगे term दा तुम pyramid g height के form ना तो कहीं g हर का 1 plus h by r का whole square उसी से नता रहा g का लग रहा है. So this 1/4 equals to 1 by h plus r by c whole square. अब this it is nothing but 1 plus h by r have as the square root lower का अंदर 2 गजा मान रहे नंगी square root हम सुनेंगे मतलब मका ऑन तो लग रहे हैं
अब तारे h by r have it is nothing but 2 minus 1 which is 1. अब h क्या तारे r, h is r, h is r. Liars. So we are going to solve two questions, only two questions. Last two questions, last two questions, last two questions of this session, of this chapter. If you solve all this, that is sufficient. No exam ke damang fully prepared tawrabani, both the NEET and my exam. Star mark thamosi, star mark very simple, but often students make mistakes. Two balls, each of radius r, equal mass, of equal mass and equal density, equal mass and equal density, are placed in contact, are placed in contact. Then the force, then the gravitation force is proportional to, however, then Fg, Fg is proportional to, is proportional to. Option number A, 1 by r squared. Option number B, r. Option number C, r to the power 4. Option number D, 1 by r. Many students often choose this A, which is wrong. कई मान हायरे इक्वल आइडेंटिकल बोलनी मबानी की रेडियस मागी आर मागी मास एम मागी डेंसिटी रो अब इफ वी वांट टू फाइंड दिस एफ जी टाइम्स मास अनि की प्रोडक्ट एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आर है दिगेनो सिगे अरापदु दिस इज आर दैट इज ट्वाइस आर का होल स्क्वायर सो इट इज जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आर स्क्वायर सो ऑफन कई दोगे है कंसीडर students think that it depends on r square, so the option should be A, which is wrong because they mentioned one thing, equal density. So that density from the mass, let's convert mass into in terms of nangi radius ka ida convert tawis. Now the haro kamai convert tawni, mass is nothing but volume into density, 4 by 3 pi r cube adu nangi density rho c whole square divided by 4 r square. Constant makai dili c hang thamo 4 by 3 pi adai loi constant अब kana kana depend torame r to the power sida mathak 6 rho square divided by r to the power 2. So the final expression is your fg depends on r to the power 4 and the rho square. Since they are asking to the relation only for r, the answer should be r to the power 4. R 1 by r square na te ko si solution. Now yeah, question star mark masam ka thamu. Next question star mark. The orbital angular momentum of a satellite revolving at the distance r from the center is L. If the distance is increases to 16r, if the distance is increased to 16r, then the new angular momentum will be. Amukong keng tau re, amukong kaso tayar hoy, amukong kaso tayar hoy. Keng yam tau gale. Loisalaji, loidorni ko, loidorni. Ngasi ki pung mapan ki class, ngasi ki online atopa class le ko. This will be the only class. Isu tau ngamaroy. Ngasi ki class le atopa. Chika tang yengo. So if the distance is increased to 16r, then the new angular momentum will be. Another angular momentum to kya hoy denu haba. Option number A 16L, option number B 64L, option number C L by 4, option number D 4L. Yung angular momentum in terms of orbital angular momentum in terms of orbital velocity is easier.
yung ako'y nakhangye nagi satellite ama khal some distance r lapa jaga da center dagi magi orbital velocity kari mane orbital velocity has a root over gm divided by r ga manadro n adu itadi angular momentum harade angular momentum the m v r natro m v not r the angular momentum ga radius ka combine mari lenagi yenga maze m higher ga v not ki moda root over g m achoba divided by r adu sida r ama yung sida mass of the satellite kesu hongoi r ki mass hongoi but l g kanada depend tawra me nagi r by root r da root r into r di kano root r so that is l depends on root r ne ma'am di ngasagi mass ki satellite ki mass hongaro r ki mass hongaro g hongdre so implies that the angular momentum 2 by angular momentum 1 hadi root over r2 by r1 ni adi ani suba radius ma 16 r oire haire hana dugi aduga hanagi original radius na kya r good so it is nothing but root over 4 root over 16 root over 16 the kya no 4 so new angular momentum will be 4 times of angular momentum 1 which is 4l 4l yaar was hai good loire sina pungloi adu ai formula macham iramge formula am ko iramge ellipse ki formula am ige let me write one formula for ellipse adu formula je question ki through do ige kaino si mukheng tawkhali sina last lo shalam dai sida please don't do it don't waste my time already matam yam chakre so last one so masu heng kan tawkhale pung ko khalak pani so after a long time nearly 1 year hai tare chahi mukhi matungda sang na ko na pung ani hena class ta ko ji one short ta ahan mani revision matam da koi one short video myam tawni ko se one short that is 5 hours ki full class 11 full class 12 mai tawran henak de pare yang asi so nagi NEET 1988 thai ngai da hangamba question ama formula ira kadoi ni question ki through da adu lesson ji largest and the shortest distance of the art from the sun are r1 and r2 respectively its distance from the sun when it is perpendicular to the major axis of the orbit drawn from the sun is option number A formula ira tok to ni I'm not going to derive anything kaino sidong heng tawri sin mana smai da berani aina sida question iri ju ubu jala ubu odi ke sugai dre anti yenge komte yenge ha se loishalam dai bhaudi kitang phajana ko loishan ji kitang phajana loishan ji apatana dikheng tawre kui melak pai ni se fare tangai phajana loishan ba bhaudi ai phajana loishan ningi so yahan ge kai leg rahe question do mang le mission question do mang le mission okay let's hope hana bhaudi disturb to birakta boko the la hi hode hona the largest याद रहने से सम समना आई सिदा सुम लोशन गेजे यार बा से क्वेश्चन नो से लोई तोक थो कोम लावइना ellipse ama leire elliptical orbit ama ko ellipse ning khalo se this is the ellipse sida sibo khana major axis ko this is your major axis यार बा minor axis side side leidon this is your minor axis center dagi sun dudi one of the focus leidon ni center leidon nate good adumana kari haire nearest point nearest fogi arapaduna r1 ni ado kwai dagi lapthokiba there is nangi affiliate hai tare sigi arapasna r2 ni hare good so nearest distance na r1 ado farthest distance r2 ni adman hai je kaino r2 na sigi major axis this is your major axis
सिने नंगे माइनर एक्सिस मेजर हम सो माइनर है वजी सेंटर डेगी चिंगदाव नहीं बट संधि सेंटर डे लेते को जन R2 ना होरेन हंदगी सुम चिंगक पदा R2 ना मेजर एक्सिस दा perpendicular ओइना लेरक पद जगह सिगी जगह दा when R is at this position यारवा न सिगी distance से पुथुआ हमनी what will be this distance of the R from the sun ज्ञान दाब्रो जे good so and C is put sun to sit later R na sit labor kanda sanga R ka distance so D is nothing but twice R1 R2 divided by R1 plus R2 isi mo khangga loko se need 1998 hangre che question number iram ge nangi screen je yare kan sida man haije keno last ni sina the distance the largest and the shortest distance of the earth from the sun are R1 and R2 respectively. Its distance from the sun when it is perpendicular to the major axis of the orbit drawn from the sun is the option A R1 plus R2 by 2 option number B R1 plus R2 by R1 minus R2 option number C twice R1 R2 divided by R1 plus R2 option number D R1 plus R2 by 2 by 3 okay yarva so the answer is option number C for a gravitation is over perfectly and completely over any sort of question you can attempt loi kumbang ngamani khale both in my exam and both NEET exam sina revision bog yauna loi loiram ni ko sina for a serial loshalaji horen atheng bagi online class ama layer roi thermal gi duma layer roi ko and thermal gi duma hayeng sunday na traga monday da sir record tawrage aduga lotion ge class ama da so from Tuesday itself we will start class 12 da electrostatic horani mai satram kan hojik session noi message sarak pada chapter wise loirak pai sir revision ki type ta tawdu tawji hai good tawrani ko sidagi di then akoi test series ki video solution thagat pa horani adagi koi कहता रहा टाइमिंग चांस आना कोई सिलेबस लोशन बजू लोशन ना बजू होना रहा है फरे लोशल जी बाय बाय गुड नाइट सी यू नेक्स्ट टाइम